377-এ বলতে দেওয়ার জন্য। আমার এলাকার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে আমি বলছি। আমার আরামবাগ লোকসভার মধ্যে তারকেশ্বরে যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় রয়েছে, সেই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টা একটা স্টেট গেস্ট হাউসে দীর্ঘদিন ধরে রান করছে স্কুলটা, এবং আমাদের রাজ্যের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অলরেডি কিন্তু জমি দেয়া হয়েছে এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়টা সেট আপ করার জন্য। কিন্তু বিগত দিন ধরে আমার এই অনুরোধ যে এই স্টেট গেস্ট হাউসে না চলে যে জায়গা দেয়া হয়েছে রাজ্য সরকার থেকে, সেখানে স্কুলটা সেট আপ হোক, যাতে ওই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভালো এডুকেশন পাক। এবং আজকে যে তারকেশ্বর উন্নয়ন বোর্ড পরিষদ হওয়ার জন্য আরও বেশি বেশি সংখ্যক পিলগ্রিমেজ আমাদের ওখানে কিন্তু আসে, তার জন্য কিন্তু স্টুডেন্টসদেরও খুব অসুবিধা হয়, এবং এই স্কুলে অনেক টিচার্সও ভ্যাকেন্ট রয়েছে। সেই ভ্যাকেন্সিগুলো ফিল আপ করার জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রী এবং এই গভর্নমেন্টের কাছে অনুরোধ করছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি এই স্কুল বিল্ডিংটাও হোক এবং যে ভ্যাকেন্সিসগুলো আছে সেটাও ফিল আপ হোক। ধন্যবাদ। थैंक यू। श्री सभापति महोदय, श्री पासवान राज एनिमलकर, ओम प्रकाश। धन्यवाद सभापति महोदय। नियम 377 के अधीन महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के लगभग 5 शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है उसको राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक जो शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय वो मेरे संसदीय क्षेत्र धाराशिव जिले में आता है। अध्यक्ष महोदय, इन महाविद्यालयों में बहुत से पद खाली है। कोरोना काल में मरीजों को ठीक करने में इस महाविद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद धाराशिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो आकांक्षी जिलों में आता है। अध्यक्ष महोदय, आज भी इस कॉलेज में इलाज करने वाले मरीजों की संख्या काफी मात्रा में है, इसलिए धाराशिव शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में कुल प्रवेश क्षमता 111 थी, जिसमें स्नातक प्रवेश क्षमता 63 और स्नातकोत्तर 7 क्षमता लगभग 48 सीटों की है। लेकिन स्टाफ की कमी के कारण, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण इस साल प्रथम वर्ष के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और स्नातकों की प्रवेश क्षमता 48 से घटकर 23 रह गई है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सारी समस्याओं को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने के बावजूद अभी तक त्रुटियों में सुधार नहीं आया हुआ है। अंततः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य के 5 शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करें और इस पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए, और जो कुछ स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको भी परिपूर्ण किया जाए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है। थैंक यू। श्री सुनील कुमार। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिहार का चंपारण 2 जिले पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में विभाजित है। मेरा संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिले में आता है। वाल्मीकि नगर बिहार का सीमांत एवं आदिवासी क्षेत्र है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक पश्चिमी कैंपस मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाए तो इस आदिवासी और सीमांत क्षेत्र के विद्यार्थियों को एकमात्र विश्वविद्यालय होगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस स्थापित है। उसी तर्ज पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का पश्चिमी कैंपस मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकि नगर में स्थापित कर दिया जाए तो इस जनजातीय क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का पश्चिमी कैंपस मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिससे इस क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थी अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती मंचुलता मंडल। Thank you very much, sir. I would like to draw the kind attention of Honorable Minister of Defence for setting up a 100-bedded hospital with special trauma care center at Dhamara, Bhadrak in Odisha. Sir, as you know,
Dr. APJ Abdul Kalam Island, formerly known as Wheeler Island, is near to Dhamara, which comes under my parliamentary constituency Bhadrak, which is the gateway to integrated test range missile testing facility. On the one hand, after its establishment, huge traffic along with population density has gone up, and on the other hand, no efficient healthcare infrastructure are available. People of this locality used to depend on Bhadrak District Headquarters Hospital, which is about 85 kilometers away. Only a primary health center is functioning by the state government. Serious patients are also passing away on the road itself while being taken to a hospital. So I request the Honorable Minister of Defence to establish a 100-bedded hospital along with special trauma care center at Dhamara to cater the need of healthcare facilities of Dhamara locality. Thank you, sir. Thank you. Shri Ritesh Pandey. बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। हृदय रोग CVD पिछले 2 दशकों में भारत में तेजी से प्रचलित हो गया है, जिससे हमारे देश में इस तरह की बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में भी चीन के बाद दूसरे नंबर के स्थान पर पहुंच गया है। इसके गंभीर प्रभाव मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर में भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 दशकों में देश में ऐसी बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में 68% से अधिक की वृद्धि हुई है और इनमें से 25% लोग 40 वर्ष की आयु के थे। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि हर साल देश में 25 से 69 आयु वर्ग में कुल मौतों में 25% लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण होती है, जो किसी भी अन्य बीमारी या स्थिति की तुलना में कहीं अधिक है। 2019 में भारत में लगभग 25 लाख मौतों का श्रेय CVD को दिया गया है। इस वर्ष यह अधिक चिंता का विषय बन गया है। पिछले 3 महीनों में दिल के दौरों से संबंधित केसेस में 200% की वृद्धि हुई है। 56% केसेस 30 से 39 वर्ष की आयु के वर्ग से आए हैं, जिनमें से 75% पुरुष और 25% महिलाएं थी। हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने वाले 8% रोगियों को अतीत में कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना भी थी। अमेरिका में किए गए एक अध्ययन ने दिखाया है कि कोविड-19 का हल्का मामला भी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद कम से कम 1 साल के लिए हृदय संबंधित समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। ये परिणाम कोविड-19 के अप्रत्यक्ष बोझ को उजागर करता है, जिसे आने वाले लंबे समय तक दुनिया भर के लोगों को उठाना पड़ सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई रोगियों को अक्सर कार्डियोपुल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR के साथ पुनर्जीवित किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके बारे में समान जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण की सुविधाएं कराई जाएं और ऐसे यंत्रों को सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाए और साथ ही साथ हृदय रोग से मृत्यु होने वाले परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का भी कष्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Shri Srinivas Reddy. Honorable Chairman Sahab, I would like to state that through the tourism sector in 2019, $19,400 crore have been added in our country gross domestic product. Today, tourism sector has developed as an industry and is playing an important role and is also associated with agriculture. It is evolving and developing as agri-tourism due to holiday accommodations with various types of food available in agriculture fields, which is adding to the income of farmers and also creating employment opportunities every year. There is about 20% increase of income through agri-tourism, which may also be an added future to realize the goal of doubling farmers' income. There is also need to increase safety of tourists in agricultural fields by issuing separate licenses through Ministry of Tourism so that the concerned people, agencies involved in it may receive loans and tax exemptions, and by involving agricultural cooperative societies also through Gram Panchayats in involvement to coordinate properly with local festivals by awarding diploma certificates in agri-tourism. Therefore, I request the Honorable Minister of Tourism to give more encouragements
incentives and tax exemptions to develop agri-tourism. Thank you, sir. Thank you. Shri Prince Raj. अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे 377 अंतर्गत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर के अंतर्गत आने वाले दो अहम मुद्दों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर कार्य प्रमंडल अंतर्गत मुरादपुर से हरिपुर घाट तक बागमती नदी पर HLRCC ब्रिज का निर्माण। दूसरा, समस्तीपुर जिले के रोसड़ा कार्य प्रमंडल अंतर्गत T01 से जमुआ मोदी नगर पर HLRCC ब्रिज का निर्माण करना अति आवश्यक है। ये दोनों ब्रिज ना होने की वजह से वहाँ के नागरिकों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आवाजाहन के लिए उन्हें नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह होती है। जिस तरीके से आज के परिस्थिति में बिहार का राजनीति परिवेश देखा जा रहा है, जिस तरीके से करवट लिया है, ये जो जनहित के कार्य हैं उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। अतः आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, मैं बिहार सरकार के मंत्री से अनुरोध करूंगा कि ये जनहित का कार्य शीघ्र से शीघ्र स्वीकृत करके इसे कराया जाए। धन्यवाद। Thank you. Shri Subrat Padak. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कन्नौज लोकसभा की दो बड़ी झीलों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। एक जनपद कन्नौज की विधानसभा क्षेत्र तिरवा में स्थित ग्राम बहोसी में और दूसरी जनपद कानपुर देहात की विधानसभा रसूलाबाद के ग्राम इटैली के अंतर्गत आती हैं। जनपद पर्यटन की दृष्टि से इन दोनों झीलों के सौंदर्यीकरण होने से इनका संरक्षण भी होगा। जनपद कन्नौज की विधानसभा तिरवा के ग्राम बहोसी की झील का क्षेत्रफल लगभग 450 हेक्टेयर का है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देसी एवं विदेशी पक्षियों का आवागमन होता है, परंतु सौंदर्यीकरण और विकास की दृष्टि से समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण यह झील अभी तक पर्यटकों का आकर्षण केंद्र नहीं बन पाई है। विधानसभा रसूलाबाद के ग्राम इटैली की झील का क्षेत्रफल लगभग 4973 मीटर है, जिसके सौंदर्यीकरण को लेकर काफी समय से स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के द्वारा मांग की जाती रही है। बड़ी झीलों का पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, किंतु इनमें हर वर्ष बहुत से प्रवासी और देश के अन्य भागों से विविध प्रकार के पक्षी आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार देश में झीलों के पुनरुद्धार और विकास के लिए कोई योजना चला रही है। यदि हां, तो कन्नौज में स्थित झीलों लाख बहोसी पक्षी विहार तिरवा तहसील एवं इटैली झील रसूलाबाद तहसील जनपद कानपुर देहात के विकास की योजना बनाई जाए। एवं आप सदन के माध्यम से मैं मांग रखता हूं कि जिससे कन्नौज के लोकसभा में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही इन झीलों के साथ साथ इसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री कृष्णपाल सिंह यादव। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे नियम 377 के तहत एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मौका दिया। महोदय, भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अवतार माना गया है और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश, तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान है। भगवान धन्वंतरी ने ही विश्व के कल्याण के लिए औषधियों की खोज की थी, जिसकी जानकारी धन्वंतरी संहिता में दी गई है। सुश्रुत ने इससे ही आयुर्वेद चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की और सुश्रुत संहिता की रचना की। इस वर्ष धनतेरस के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा आयोजित की गई थी। भगवान धन्वंतरी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और उनका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद पुराण में भी किया गया है और उन्हें भगवान का चिकित्सक भी बोला जाता है। भगवान धन्वंतरी को हिंदू धर्म में देव वैद्य की पदवी हासिल है और वह चिकित्सा जगत की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा की स्थापना की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं के जनक होने के कारण उनका महत्व और योगदान देश तथा विश्व के हर नागरिक को पता चले। धन्यवाद। थैंक यू।
The House will now take up the discussion and voting on supplementary demands for grants. First page for 2022-23. Sri Hanuman Beniwal has tabled 6 cut motions to the supplementary demands for grants. If the honourable member wants to move these cut motions, he may send a slip at the table within 15 minutes indicating the serial number of the cut motions he would like to move. Item number 13 and 14 shall be taken up together. Now, Dr. Shashi Tharoor. Nishikant Dubai, Shri Nishikant Dubai. धन्यवाद सभापति महोदय. Just behind is my seat and have taken permission. So now this is my block. Mr. Tharoor came, sir. Okay. Shashi. Dr. Shashi Tharoor, please. My apologies, Mr. Speaker. Mr. Chairman. Thank you for this opportunity to present my party's views on the supplementary demands for grants 2022-23. We are meeting at an uncertain time for economic revival in our country. The economy has been laid low ever since demonetization and then shattered by the pandemic and the resultant lockdown. The star performers like tourism and the services sector were devastated and are only now recovering. And if the backbone of the economy, agriculture and the MSMEs, can be described in any one word, they're both in crisis. As I pointed out during the budget debate in this House last February, the government gave us the usual combination of high rhetoric, grand ambition, exaggerated numbers and unrealistic targets, all diluted with underwhelming allocations to crucial sectors. The very fact that the Finance Minister has come back with such a large supplementary demand for grants testifies to this once again. The government had budgeted a total expenditure of 39.45 lakh crores in fiscal year 22-23. But as spending, and as I predicted in this House, has defeated the estimates, excess expenditure has inevitably brought her back to the House with this new request, and the gross additional expenditure she seeks is over 4.36 lakh crores, 11.05% of the entire budget estimate, of which net additional spending constitutes over 3.25 lakh crores, including over 1.0 lakh crores for fertilizer subsidy payments. Now, in the budget speech, sir, I had warned that the significant reduction in fertilizer subsidy by about 25% was untenable. That point has been borne out in the past year when the government has had to augment the original budget of 1.5 lakh crores with an additional 1.10 lakh crores, and that amount is also being breached. To remind, the 2022-23 budget estimate was 1,09,242.23 crores. The supplementary demand raised is for 1,01,09,288.95 crore. That is more than the original budget itself. I know what my good friend, the Finance Minister, is going to say. She will point to factors beyond her government's control. Now, while the increased cost of imports, including of raw materials, largely due to the Ukraine-Russia conflict, does explain a part of the adjustment, a more than 100% estimate in the budget estimate, a more than 100% increase in the budget estimate, does raise the question as to whether the government is finding it difficult to wrap its collective heads around the evolving situation and is capable of charting a robust future-looking vision. Between 2018-19 and 2020-21, India's fertilizer imports increased almost 8% to 20.33 million tonnes from 18.84 million tonnes. Of course, we can't control all the surprises that global geopolitics may throw up. But regardless, sir, it is indeed a matter of concern that we are becoming increasingly reliant on imports of fertilizers. The government cannot afford to sit tight when the circumstances are favourable and then put blame on external factors when unfavourable conditions arise. We need to be prepared, and it's a matter of concern that all the government's talk on Atmanirbharta hasn't come to our help in this challenging time.
To take one example, in March 2022, the government mandated the revival of 6 central PSU fertilizer units to augment domestic production of urea. What is the status of these plants? What is their production? What are we doing to improve self-reliance? No, we're continuing to import, and she has come back for more money. The Standing Committee on Chemicals and Fertilizers, which I have just had the pleasure of becoming chair of, but 2 years ago, under the chairmanship of my good friend Ms. Kanimuri, found that many fertilizer manufacturing facilities are not working at their maximum efficiency and are using highly outdated technology and systems. The government has to bear the cost of this inefficiency through higher subsidy. Capital expenditure was allocated only a measly 0.05 crores in the current budget, and there is no addition in the revised budget, no supplementary for that. So it's doubtful that the government is in fact putting in sufficient resources to focus on the improvement of our infrastructure and capacity. The ill effects of this situation, despite the government's claims of cushioning the impact on farmers, cannot simply be wished away. The government's price protection alleviates the effect of these increases excuse me, sir, only with regard to nitrogenous fertilizer, urea, but not on diammonium phosphate or DAP and muriate of potash, MOP, where subsidies are capped. But prices of these items have inflated due to global market trends, and as many as 5 farmer suicides in the Bundelkhand region have been reported just in the last year on account of fertilizer shortages. Now, nearly half of the DAP requirement is imported, mainly from West Asia, while the domestic MOP demand is met solely through imports also from Belarus, Canada, Jordan, and so on. Where is Atmanirbharta here? There is none of it, sir. The rise in fertilizer prices, in effect, reduces the disposable income of farmers. This income has been declining under the Modi government, in any case, by 8.9% between 2013 and 2019, according to the NSO survey last year. Now, on the topic of farmers, an RTI response by the Agriculture Ministry stated that payments made to beneficiaries under the Prime Minister's much-touted Kisan Samman Nidhi, PM Kisan, have fallen by 67% in the 11th installment disbursed in October 22. It's probably due to this that the supplementary demand for the Department of Agriculture is quite low, in just 4 lakhs. But what does this say of the government's commitment to farmers' welfare? This is a scheme which provides a minimal support of only 500 rupees a month, which isn't pegged to inflation, nor is it likely to cover the increasing input costs faced by farmers. But even so, the reduced coverage compounds the vulnerability of our Kisans. Respected Chairperson, on the subject of NREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, I am sorry to have to serve as Banco's ghost, regularly popping up in our finance minister's nightmares to remind her of her sins of omission. During the last debate on the union budget, I had pointed out that it was a matter of national disgrace that this government had, during a period of record levels of unemployment and distress in our country's economy, particularly the rural economy, chosen to slash the funds for NREGA by nearly 25% or 1/4. With the original allocation of rupees 73,000 crores, it was a move that not only defied logic, but constituted a blatant disregard for the crisis that has engulfed rural India. And what was worse, the original allocation also needed to account for an estimated 20,000 crores in payments pending from the previous year, effectively leaving the scheme this year with a paltry 50,000 crores, whereas most experts have consistently argued that NREGA needs anywhere between 1.3 lakh to 3.4 lakh crores in order to meet burgeoning demand for jobs with the minimum guarantee of 100 days of employment. Don't forget, sir, our unemployment levels in our country today have broken all records. In 2021, we reached the highest figures ever since unemployment figures began to be recorded in the 1930s. That's how bad the situation is. Obviously, relief is required. It's no wonder that even the Ministry of Rural Development had recently sought an urgent infusion of at least 25,000 crores, which sadly does not go far enough to address the current situation and is akin
to trying to extinguish a forest fire with a glass of water. As recently as May and June this year, over 30 million individuals had sought work under Manrega. 3 crore people had asked for jobs, sir. A demand that was last seen to such a degree in 2006, which is why the scheme was invented. As many experts have pointed out, the demand represents a 43% increase over pre-pandemic levels, a reflection of the grave challenges of widespread inflation and severe unemployment under which the rural economy is grappling with currently. Further, experts have also highlighted that across the country, pending wages to the staggering tune of 11,097 crores had accumulated as of June this year, sir. No wonder then that as recently as August this year, Manrega workers from over 15 states across the country sat in protest at Jantar Mantar, demanding urgent intervention from this government to address their critical concerns. Sadly, it appears that all their speeches, all their pleas have fallen on deaf ears. While the government may claim that the additional infusion for Manrega could offer some form of atonement for this catastrophic series of omissions, their budgeting of such a paltry infusion makes it clear that they have learned little from their historic disregard of the scheme. The additional outlay of 22,039 crores does not even match the request sought by their own Ministry of Rural Development and is nowhere close to taking the total allocation to the 1.3 lakh crores that experts have called for and that I had called for in this House in February, for the scheme to be sufficiently able to cater to the existing demand for rural work. Respected Chairperson, it's clear that in their logic-defying allocation to Manrega, the government has effectively reduced the 2 key words of employment and guarantee to hollow, meaningless terms. Neither is enough employment being provided, nor is there any guarantee that employment is assured. Absolutely right. The national net balance of Manrega funds is at a deficit of rupees 15,190 crores. Not to mention that almost 9 crore households have demanded work this year, of which 1.42 crore households that have applied are yet to be issued job cards, let alone be provided employment under the scheme. Further, more than 95% of households employed in Manrega this year, 95% have not got 100 days of work. And yet, despite the growing mountain of evidence pointing for the urgent need for redressal, you, Madam Finance Minister, have chosen to offer a token additional sum. In fact, the overall allocation to the rural sector has seen a scale down from rupees 2,16,342 crores to 1,94,633 crores, including the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin and the National Social Assistance Programme schemes, indicating the government's negligence of the social sector. And while the PM Awas Yojana Gramin had a mandate to build a Pakka house with basic amenities for all homeless families and for all those living in kacha or dilapidated houses, by March 2022 it could achieve only 55% of its target by December last year, forcing the government to extend its deadline to provide Pakka houses to all families in rural India by 2 years. So the deadline, which was meant to be fulfilled by March 2022, is now March 2024. And we all are supposed to let this pass without giving it any thought. Again, promise, under-budgeting, poor implementation, here is the result. And I might say, sir, I know that there is some additional money in the Pradhan Mantri the Kalyan Yojana. But the fact is that throwing sops because you fail to address the underlying problem is no solution at all. The appalling disregard for vulnerable communities extends to other groups as well, including, for instance, groups like our fishermen, who represent some of the most economically challenged groups in our country and for whom there are no supplementary demands in this budget. Fishermen in my constituency of Thiruvananthapuram have had to contend with the severe challenges like the devastation of Cyclone Oki, the floods of 2018 and 19, and then the pandemic. In addition, they've had to contend with the perennial challenge of coastal erosion,
that literally washes away their homes but remains a matter this government has done little about. I've written to the Prime Minister, sir, and pointed out that if China had taken 2 inches of our land, we would all be up in arms saying that they have taken Mother India's territory. Here, the sea has taken away 64 kilometers of territory in my constituency, 64 square kilometers, and no one has bothered to find any money to address these problems. Homes have been toppling into the ocean, sir. Whether it was the budget presented this year or the supplementary demands for grants, it is most unfortunate to note that once again this government has neither looked into offering a special economic package for our coastal communities, as I've repeatedly called for on the floor of this House, nor are there any mitigation efforts by this government, either in terms of fiscal support or kerosene subsidies, which we know have been abolished, or funds for conversion of kerosene engines to diesel in that case, or even lower GST on nets and fishing equipment. None of that. The fishermen just don't matter to this government. I'm sorry to say that though our own Honourable Prime Minister has often reminded us that the strength of India lies in her villages and that there is a need to bridge the gulf between urban and rural India, it is abundantly clear that this government has no regard for rural India, no regard for the children of the sea, and is actively engaged in widening the chasm between these two Indias. Not just in its disregard for Manrega or our farmers, but through its consistent reduction in the allocation for rural development and social security schemes like the Pradhan Mantri Awas Yojana Rural, the National Rural Livelihood Mission and the Midday Scheme, and in the neglect of our hard-working fisherfolk. A similar narrative, Mr. Chairman, emerges from the government's disregard for the healthcare sector, which has been consistently underfunded and barely features in the supplementary demands for grants presented by the Finance Minister. As I pointed out earlier this year, despite the frailties in our medical infrastructure that were exposed by the pandemic, the health sector was originally allocated only 200 crore rupees more this year. Yet again, I must say that the overall decrease after factoring inflation was a long way off from the goal envisaged in the National Health Policy 2017, which had announced that they would spend 2.5% of GDP on health. In fact, we all know that a majority, 67.8% of expenditure on healthcare in India comes from out of pockets of ordinary people. Aam Aadmi expenditure is what is sustaining the healthcare business in our country. It's not just one of the highest figures in the world, but pushes almost 55 million of our fellow citizens under the poverty line each year. People are living one serious illness away from poverty, sir. The COVID-19 pandemic has offered a fresh impetus for more financial support from the government, not just in healthcare, but also in critical research on public health. Yet, rather than learn from these lessons, the government has only nominally increased funds for the Ministry of Health and Family Welfare, and there is no significant number in the supplementary demands for grants. Now, we note that 22,000 crores are to be paid to the oil marketing companies for their losses on LPG cylinder sales. There are no supplementary allocations specifically for their losses on fuel. But I would like to draw the attention of this House to the troubling fact that government data shows that fuel prices are being kept unchanged for weeks and sometimes months before assembly elections, only to be changed soon after. Data from the Oil Ministry's Petroleum Planning and Analysis Cell shows that petrol and diesel prices have been controlled, that most of the control is exerted in the months leading up to an assembly election and are relaxed once the assembly elections are over. For example, an excellent article in the print today shows that prices were kept unchanged for 5 days before the assembly elections in Arunachal Pradesh, Andhra Pradesh and Sikkim in April 2019 and changed after. By the time the Bihar elections were held in November 2020, prices were kept unchanged for 51 days before the last date of polling and then began to be changed within 2 weeks after. Before the West Bengal elections in 2021, fuel prices were kept unchanged for 31 days before the last date of polling and were changed just 5 days after. Then, of course, the duration of unchanged fuel prices rose sharply because of oil prices in the international market. Before the 5 assembly elections in February-March of this year, UP, Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand, prices were kept unchanged for a whopping 4 months prior to the last day of polling.
Notably, the revision of prices resumed just 2 weeks after the elections got over, and the recently concluded elections in Himachal and then Gujarat showed a similar trend. Fuel prices were kept unchanged for more than 8 months before the last day of voting in Gujarat, and it remains to be seen for how long these prices will remain unchanged now that the elections are over. I say this, sir, because while the finance minister will say that pricing decisions lie with the oil marketing companies, that is unlikely to be the case, since it's clear that it is the oil marketing companies that have to bear the brunt of having to buy expensive oil and sell fuel at cheaper prices to suit the government's political convenience. This will ultimately pose a cost to us, the taxpayers, either in terms of any bailouts the government has to transfer to these companies to cover their losses, or to all of us as consumers, because even with world oil prices reducing as they now or in the future, fuel prices in India will be kept high so these companies can recover their losses. Otherwise, yet another supplementary demand for grants will be needed, Mr. Chairman. Now, let me try and pull all this together. During my intervention at the time of the debate on the Union budget in February, I pointed out that we'd have to look at the macroeconomic figures presented by the Finance Minister with healthy skepticism. And in many ways, the supplementary demands for grants we've got confirm this suspicion. For instance, the additional demands confirm that it's unlikely that the government will be able to stick to its claim of a 9.5% fiscal deficit target, which itself, of course, represented a 6% rise from last year's target. The current cash outgo of 2,99,000, basically 3 lakh crores, clearly shows that the government will be unable to stick to its own intentions of capping the fiscal deficit at 6.8% of GDP. Now, while we in the opposition can understand the critical need for government spending as a result of the pandemic, and we ourselves have been calling for some government spending the government has not been willing to do, like MREGA, we urge the government to stop presenting unrealistic targets before the House and offer more transparent numbers before this country. Take, for instance, the disinvestment targets. The previous fiscal targets relied all too much on the unrealistic assumption that the government would receive 1.7 lakh crores in disinvestment receipts. But we all know this government has failed to meet their disinvestment target in 4 out of 6 years since 2014. In the rare instances where they've managed to do so, it has only been made possible by the comical situation where one PSU has bought shares from another PSU. That track record extends to this year as well. At the end of October, the government has only managed to raise 9,333 crores, according to data from the Controller General of Accounts. Moreover, while a lot was said about the sale of the national carrier Air India to the Tata Group, a significant component of these demands for grants involves a 62,057 crore allocation for the Air India Asset Holding Company Limited, which carries the burden of the majority of the debt that the carrier was under. As part of the sale, the government has remained liable for nearly 46,000 crores, a debt that has been unfairly passed on to the taxpayers. I've been listening to the late Jaitley ji's and now Madam Sitharaman's budgets attentively since 2014, Mr. Chairperson. Every single year, he and she have announced fiscal deficit targets, and every single year they have failed to meet them. You have mentioned privatization targets and failed to meet them. You projected improvements in the tax to GDP ratio, and you failed to meet those. You promised Achhe Din, and now you've moved the goalposts some 25 years into the future, when none of you will be around to be accountable for that either. I'll wrap up in a minute, Mr. Speaker. I'm sorry to say that the underlying vision that this government has presented, first through the Union Budget 22-23, and now in these supplementary demands for grants, is a story of failure. A fondness for grand announcements, followed by consistently inadequate implementation. A talent for developing flashy slogans like Achhe Din, New India, Make in India, and Amrit Kal, none of which any of us have ever seen or seem likely to see. Thus, while destroying the foundations of all that was good and noble about the old India, and in so doing leaving the Indian middle class, the Aam Aadmi, the farmers, the fisherfolk, the poor and the marginalized to face today's Andhkal on their own. We will not oppose these supplementary demands for grants, Mr. Chairman, because the nation needs them and more.
but we deplore the needless rigmarole behind the process that has brought us to this point. The unrealistic budgeting, inflated promises, and unreliable assumptions that oblige our finance minister to come back to the House time and again with such revisions. I really hope that when she returns to the House in February with next year's budget, she avoids making the same mistakes over and over again, and that we have seen again this time repeatedly every year, and she gives us a budget that her government can actually work within. Thank you very much, Mr. Chairman. श्री निशिकांत भाई। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी कर्मठ और योग्य वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। सर, मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के हमारे मित्र को, तो वसीर बद्र साहब एक बहुत बड़े शायर हुए सर। उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही कि सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, झूठ बोलो, झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। किताबें, रिसालें, न अखबार पढ़ना, मगर दिल की हर रात एक बार जरूर पढ़ना। जब रात में आप जाते हैं घर तो अपने बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। जितनी बातें कही सर, पहले मैं उसमें आता हूं, फिर सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स पर आता हूं। सबसे पहले मैं एयर इंडिया से ही शुरू करता हूं सर। वाजपेयी जी की सरकार थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों बहुत ही प्रॉफिट में थे सर। वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में। दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं वो सब इस सरकार को चलाने लगे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री थे, उनके साथ चिदम्बरम साहब महान अर्थशास्त्री, अब नहीं है, हमारे राष्ट्रपति महोदय थे प्रणब मुखर्जी साहब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब, सुब्रमण्यम साहब, आप नाम लीजिए। इस देश में जितना टैलेंटेड इकोनॉमिस्ट थे सब के सब कांग्रेस की सरकार को चलाते थे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने चलाया और उन्होंने एक फैसला किया सर कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को जो है हम मर्ज कर दें। बहुत अच्छा हुआ, कभी मर्ज नहीं हुआ सर। 2010-11 तक जबकि यूपीए 2 बनी तब भी एक कमेटी इन लोगों को बनानी पड़ी, धर्माधिकारी कमेटी। और धर्माधिकारी कमेटी ने यह कहा कि एयर इंडिया का जो एम्प्लॉय का टेंशन है वो अलग है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है, इंडियन एयरलाइंस का अलग है। कभी मर्ज नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं था, मर्जर के बाद जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं थी जहाज खरीदने की, यदि मेरे पास ये सॉल खरीदने की हैसियत नहीं है सर तो मैं कैसे सॉल ये ले सकता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तय कर दिया कि मुझे 108 हवाई जहाज खरीदना है और उसके लिए भारत सरकार ने सॉवरेन गारंटी दे दी। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो प्रॉफिट में था, तत्कालीन जो एयर इंडिया के सीएमडी थे जो बाद में इलेक्शन कमिश्नर हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने लिखित कहा कि ये काम मत करिए, ये देश के लिए आप जो है अन्याय कर रहे हैं। लेकिन जब कमीशन खोरी की सरकार हो सर तो क्या करती है, उसने उस सॉवरेन गारंटी में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को ऐसा फंसा दिया, उस लेगेसी से आज तक हम नहीं निकल पाए। और फाइनली मैं भारत सरकार को और सीतारामन जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने फाइनली एयर इंडिया को जो 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ प्रत्येक साल देते थे, आज हमने उस पर विराम लगा दिया है। इसके लिए आप बधाई नहीं देंगे, बधाई के बदले मुझे कहेंगे गलती आपकी, चोरी आप करिए और दोषी हम। हमने क्या किया? और इस पार्लियामेंट में लगातार, मैं जिस दिन से सांसद बना 2009 से लेकर 2014 तक, कम से कम 10 बार, गुरदास गुप्ता साहब अभी नहीं है, लगातार मैं इस सरकार को आगाह करता रहा कि आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, आप एयर इंडिया के लिए कुछ करिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। आज यदि सरकार ने किया तो बधाई और धन्यवाद देने के बदले आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं।
दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का। सर, इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कह दी। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स हम करते हैं कि आप करते हैं? आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया? आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया? क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए। और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है? 2014 तक, क्योंकि आपको यह पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है। और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए, और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरा सवाल यह है सर, हेल्थ पर इन्होंने कहा, हेल्थ पर है ही। आप समझें कि पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, पूरे देश को एकत्रित किया, 130 करोड़ लोगों की यदि जान बची। आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया। मैं तो कोरोना के बाद संजोग ऐसा हुआ सभापति महोदय कि मुझे दुनिया के लगभग 50 देशों को घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने यूके भी देखा, मैंने यूरोप भी देखा। जितने विकसित राष्ट्र थे, और आज जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट शासन में जहां की सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीबत है, जहां अपने जान में जोखिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं, वहां कोरोना ने यह हालत कर दिया कि आज वहां गांव से लेकर शहर तक, हॉस्टल से लेकर खेती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा न्यूयॉर्क शहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है। वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यूके की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। हमारा सौभाग्य है और हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस इंग्लैंड ने, अंग्रेज ने हमारे यहां रूल किया, आज भारतीय मूल के वहां प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं सुनक जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में माननीय सीतारामन जी के कारण, वित्त मंत्री के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम 130 करोड़ लोगों का जान बचा पाए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था, पोलियो से लेके छोटा मलेरिया फलेरिया तक होता था सर, उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतजार करना पड़ता था। आप रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया। आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 एम्स बना। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया। कुछ भी डाउन कर दिया, हमने 130 करोड़ लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया, इसके लिए आपने कभी बधाई दी, कभी विरोध के लिए विरोध करना है। इसी तरह का डिबेट चलेगा सभापति महोदय। अब मैं आपको बताऊं कि ये डिमोनेटाइजेशन पर आते हैं। उस दिन अधीर चौधरी साहब भी बोल रहे थे सर, और आज जब स्टार्ट किया शशि थरूर साहब ने, मुझे लगता है कि
घड़ी कभी कभी जब रुक जाती है तो कांग्रेस की घड़ी, मैंने उस दिन भी बोलते हुए कहा था कि 1950 में कांग्रेस की घड़ी रुक गई, इसके आगे जो है वो बढ़ ही नहीं पा रही। होता है ना कि हमारे घर में बहुत गांव गरीब जमींदारी है सर, तो जमींदार के यहाँ क्या था कि किसी जमाने में मान लीजिए कि हाथी घोड़ा बंधा हुआ रहता था, आज तो जमींदार के पास हाथी घोड़ा बनता नहीं है, तो कोई जब फंक्शन होने लगता है तो किराए पर जो है वो हाथी घोड़ा लेकर आ जाते हैं और वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम जमींदार हैं। उसी तरह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस को कोई चीज समझ में नहीं आता कि उसने जब जब शासन किया इस देश में, जब 2014 में माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया, उस वक्त देश के हालत क्या थे? कहीं भी बम विस्फोट हो सकता था, कहीं भी दंगा हो सकता था, फेक करेंसी का बोलबाला था, ड्रग्स डीलर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजय भंडारी से लेके जो अगस्ता वेस्टलैंड में अभी बंद हैं क्रिश्चियन मैकेल तक, ये सारे के सारे जो है ड्रग्स डीलर, आर्म्स डीलर, ड्रग्स का मनी, ट्रैफिकिंग का मनी, चाइल्ड और महिला के ऊपर जो है निर्भया जैसे कांड हो रहे थे। इस तरह के कांड को रोकने के लिए क्या आपको नहीं लगता था कि इस इकोनॉमी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ब्लैक मनी को बचाने की आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? और आरबीआई यदि कोई प्रपोजल लेकर आता है कि यदि आपको टेरर को खत्म करना है, आर्म्स और ड्रग्स के मनी को खत्म करना है, फेक करेंसी को खत्म करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, तो उसके लिए रास्ता डिमोनेटाइजेशन है, तो डिमोनेटाइजेशन जो है कर दिया तो हमने गलत काम कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि आप आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठन को, जो कि हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सदस्य हमारे यहाँ हैं, उसके लिए आप उनकी मदद करते हैं? आपको उसके लिए बधाई नहीं देनी चाहिए कि आज जो है ये कम हो गया? 2000 का नोट जो है रीमोनेटाइज हो रहा है, और 2000 नोट जो कांग्रेस ने बचा के रखा है वो निकाल के ले आइए, जनता के बीच में ले आइए, नहीं तो एक दिन यदि घोषणा कर देंगे कि वो 2000 का नोट इतने तारीख से खत्म हो जाएगा तो आप लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसके बाद सभापति महोदय, मैं मनरेगा पर आता हूं। यहां सारे सांसद बैठे हुए, मनरेगा पर उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं यहां मनरेगा पर आता हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि मनरेगा जो है कांग्रेस सरकार की सबसे घटिया योजना है। मैं सांसद होने के नाते यह बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात बता रहा हूं। मनरेगा में जितना करप्शन है शायद किसी भी योजना में करप्शन नहीं है। 50 से 55% मनरेगा में करप्शन है। आप देखिए हमारे सांसद कर रहे हैं 80%, क्योंकि सभी लोग मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। और मनरेगा आपने यदि लागू कर दिया, मनरेगा आपको पता है कि क्या लागू किया, क्या कानून आपने पास किया? वो डिमांड ड्रिवन है। ये कानून है कि जो राज्य जितना मांगेगा, जहां जितनी आवश्यकता होगी वहां उतना दिया जाएगा। यही कारण है कि आपकी जो पॉलिसी रही है, क्या होता था कांग्रेस की पॉलिसी कि बजट एस्टीमेट वो अलग बनाते थे। जैसे बजट पेश किया, बजट एस्टीमेट है। जैसे अभी लेकर आई निर्मला सीतारामन जी 4,37,36,000 करोड़ का जो है नया सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर आए, तो वो कहेंगे रिवाइज्ड एस्टीमेट इतना होगा। और जब एक्चुअल होने लगेगा, जब 31 मार्च के आसपास होने लगेगा, तो उसमें जितना जो बजट एस्टीमेट है उससे भी कम जो है उनको डालना है। कांग्रेस की हमेशा नीति, मैंने आपको कहा ना कि देश को गुमराह करने का किसी ने काम किया, यदि इसके बैलेंस को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है कांग्रेस है कि उसका बजट एस्टीमेट अलग है, रिवाइज एस्टीमेट अलग है, एक्चुअल एस्टीमेट अलग है। हमारी सरकार है, हमारी सरकार क्या करती है कि बजट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट से जो एक्चुअल एस्टीमेट है वो और ज्यादा खर्चा होता है। और यही कारण है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो डिमांड ड्रिवन है, जिस राज्य को जितना चाहिए, जिस लेबर को 100 दिन के रोजगार के लिए राज्य को काम करना है, लेकिन हम तेलंगाना तो नहीं बनने देंगे ना। वहां अभी नरेगा में जो है यहां किशन रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा फंड डाइवर्ट हो गया। हम बंगाल तो नहीं बनने देंगे ना, कि पूरा का पूरा बिहार नहीं बनने देंगे। आज की स्थिति ऐसी है कि राज्यों के पास पैसा नहीं है। राज्य जो है अपनी योजनाओं को गलत तरीके से चलाने के लिए मनरेगा के फंड को यदि डाइवर्ट करेंगे तो क्या उसके लिए ऑडिट नहीं होगा? और यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेजेंगे तो कहां भारत सरकार को सपना आ रहा है कि वो आपको पैसा भेज देंगे? और यदि मंत्री मिले थे हमारे स्टेट का, मैं डेलीगेशन लेके गिरिराज मनरेगा का हाउ इश्यूज हैव बीन डिसाइडेड नाउ, दे आर मोटिवेटेडली टारगेटिंग। मैं ये कर रहा हूं सर,
कि मैं चुनाव में जो है 1.5 महीने वहां बंगाल रहा हूं सभापति महोदय, और मुझे यह पता है कि यह फंड डाइवर्ट हो रहा है, और यदि फंड डाइवर्ट हो रहा है तो भारत सरकार के नियम के हिसाब से यदि आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे, भारत सरकार यदि संतुष्ट नहीं होगी, तो हमारे और आपके चाहने के बावजूद भी वो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश कानून से चलता है और कानून ये कहता है। आप सुदीप दा यहाँ के मंत्री रहे हैं, सीनियर आदमी हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आप ही जिस विभाग के मंत्री रहे, आप ये बताइए कि बिना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के आप अपने मंत्रालय में किसी राज्य को पैसा दे पाए? आपका पता कैसे हुआ कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया गया? इसी कारण से होगा, नहीं तो कोई दूसरा वो मंत्री Your turn will come. You can address. मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। He is not yielding. Your turn will come, honorable member. You can address. इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, No. इस देश में Your सभापति turn will come. इस देश में सभापति Your turn will महोदय come. दो लोगों में, सभापति महोदय मैं आप ही को कर रहा हूं, सभापति महोदय, इस देश में दो लोगों पर आई एम एड्रेसिंग यू ओनली, आई एम फोकसिंग यू, आप ही की तरफ, एकदम अर्जुन की तरह जो है, केवल मैं सभापति महोदय के चेयर की तरफ देख रहा हूं सर। इस देश में फर्टिलाइजर पर अभी बड़ा भाषण हुआ। 2 चीजें जो है राजनीति करने के लिए, हम जितने लोग पॉलिटिशियन हैं सर, 2-3 चीजों पर हम लोग खूब राजनीति करते हैं। किसान की आय दुगुनी होनी चाहिए, किसान को फायदा होना चाहिए, किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान के साथ नुकसान होता है तो वो अन्नदाता है, और दूसरा गरीब को जो है अमीर कर देना चाहिए, महिलाओं को जो है सुरक्षा हो जानी चाहिए। कोई ऐसा आदमी है इस देश में और खासकर पॉलिटिक्स में जो कि इन चीजों को नहीं जानता है, इन चीजों को भोगना नहीं चाहता है? लेकिन जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात हुई कि 1,09,000 करोड़ रुपया हम फर्टिलाइजर सब्सिडी में दे रहे हैं, वो समझने की बात है सर। इन बिटवीन द लाइन कांग्रेस के जो हमारे पहले के वक्ता थे वो सुनते नहीं है भाषण सर, बोल के चले जाते हैं। मतलब हमने हमेशा देखा है, ये चेयर्स को मैं ये कहता हूं कि ये गलत आदत है सर, उनको कम से कम भाषण सुनना चाहिए, कि बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप ये समझें कि उन्होंने बिटवीन द लाइन ये जरूर बात कही कि जो कच्चा माल है उसका, जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कच्चा माल है, वो कच्चा माल हमारे यहां नहीं है, और जब हमारे यहां नहीं है, जो खान हमारे यहां नहीं है, उस पर हमारा और आपका क्या कंट्रोल होगा सर? तो भारत सरकार क्या किसानों को सब्सिडी नहीं देगी? क्या ये चाहेगी कि उनको जो है मार्केट जो है तय करे कि फर्टिलाइजर का रेट क्या होगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 चीजें जो बड़ी बात कही, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, कृषि मंत्री का, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री का और वित्त मंत्री का आभारी हूं और बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां कहीं कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद क्या हुआ? 2014 के बाद कृषि के क्षेत्र में जो बड़ा काम भारत ने किया, उसके लिए पूरे देश को खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। यूरिया का जहां तक सवाल है सर, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, 50 किलो यूरिया के बदले आज अब 500 मिलीलीटर आप नैनो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जिस किसान को 50 किलो यूरिया उठाना पड़ता था, जिसके लिए दाम देना पड़ता था, आज भारत देश नहीं दुनिया का सबसे पहला राष्ट्र है जिसने कि नैनो फर्टिलाइजर बनाया, और उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है, और जगह जगह नैनो फर्टिलाइजर के प्लांट बैठ रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ा काम है? और उसके कारण से जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हम दे रहे हैं, और बाद में यही नैनो डीएपी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसको आगे बढ़ाने वाले हैं कि यूरिया से ये डीएपी में भी जाने वाला है, तो उसके बाद एक तो किसानों को फायदा होगा कि 50 किलो जो है उनको बैग नहीं खरीदना पड़ेगा, 500 मिलीलीटर वो पॉकेट में ले जाकर उसका उपयोग करेंगे, और दूसरा जो हम इतना बड़ा फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक हो जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि हमने अपने पीएसयूज को कई एक जगह जो बंद हो गया था खाद का कारखाना, जैसे मेरे झारखंड में ही सर सिंदरी में एक फर्टिलाइजर का खाद कारखाना था, यूरिया बंद हो गया, आपने अपने कारणों से बंद कर दिया। आप आज पीएसयू बेचने की बात कर रहे हो, पीएसयू को तो आपने ऐसे ढक्कन की तरह बेच दिया कि खत्म ही कर दिया। बरौनी का फर्टिलाइजर बिहार में था सर, बंद हो गया। गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट था उत्तर प्रदेश में, बंद हो गया। तालचर का फर्टिलाइजर प्लांट था
उड़ीसा में बंद हो गया, रामगुंडम का था वो बंद हो गया। ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया 2014 में कि हमारी जो निर्भरता बाहर में है और जो ये प्लांट पड़े हुए हैं इसके लिए कुछ ना कुछ काम करो। और आज ऐसा सिचुएशन हो गया सर कि आज ये सारे फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हैं और अगले साल से मुझे लगता है कि अपने को इंपोर्ट बहुत कम करना पड़ता है। आपकी गलती, आपने प्लांट बंद कर दिया, आप रिसर्च डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो। रॉ मटेरियल के लिए जिस पीएसयू को एनएफएल से लेके सारे जो भारत सरकार के जो यूनिट थे उनको जॉर्डन में कैसे माइंस खरीदना है, मोरक्को में कैसे माइंस खरीदना है, जिसके कारण कि हमारी जो निर्भरता है कच्चा माल पर वो कम हो पाए, उसके लिए आपने कभी नहीं सोचा। और उल्टा जब आज हम किसानों को सब्सिडाइज रेट में, क्योंकि उनको हम बोझ नहीं डालना चाहते, किसानों को बचाना चाहते हैं, किसानों को कभी भी आपके जैसे राज्य में आत्महत्या करने के लिए किसानों को मजबूर होना पड़ता था, वो हमारे राज्य में नहीं हो। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी उसके लिए पैसा दे रही हैं तो आपको वो बड़ा बुरा लग रहा है। आपको कह रहा है कि हमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आज यदि 1,09,000 करोड़ में भी नहीं होगा तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला जब बजट होगा तो यदि उसके लिए 50,000 से लेके 1,00,000 2,00,000 करोड़ की भी आवश्यकता होगी तो किसानों को बचाने के लिए सरकार वो पैसा भी देगी। ये माननीय मोदी जी की सरकार। आप बिना बात के अब पीएम आवास रूरल और अर्बन पे आइए। इसमें हमने फंड दिया है। जब हम और आप भी हमारे साथ सांसद थे सभापति महोदय, जब हम बने एमपी तो 30,000 32,000 जिसमें कि एक वॉशरूम नहीं बनता है उसमें जो है प्रधानमंत्री आवास बन रहा था। और शहरी क्षेत्र में तो बात ही छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्र में बनता था। जब माननीय प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने टारगेट रखा, कहा कि 2022 के टारगेट को 2024 कर दिया। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2022 टारगेट रखा था उनको यह पता था कि यह 2 साल जो है पूरी दुनिया का रहने वाली है, पूरी दुनिया जो है कोरोना के कारण जो है परेशानी में हो जाएगी, हमको अपने व्यक्तियों का जो है, हमको अपने समाज के लोगों का, हमको अपनी जनता का जो है जान बचाने के लिए जो है सबसे ज्यादा परेशानी होगी। इस 2 साल तक पूरा का पूरा दुनिया तबाह रहा। यदि 2022 से 2024 कर दिया और आज प्रधानमंत्री रूरल में या प्रधानमंत्री अर्बन में हम पैसा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे हाउस होल्ड को हम पक्का का मकान देंगे, सारे हाउस होल्ड को हम यदि पाइप पानी देंगे जल जीवन मिशन में, और उसके लिए यदि हम पैसा दे रहे हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? उसके लिए आपको धन्यवाद देने के बदले गरीबों को मकान नहीं होना चाहिए? या आप ही की तरह जो है गरीब को जो है कि हम गरीबी रेखा से हटाएंगे। 1971 में इंदिरा जी ने कहा कि गरीबी हटाएंगे और 2014 तक नहीं हटा पाए और गरीब को केवल झूठ का बरगला कर जो है आप वोट लेते रहे। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी यदि सबको एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना में, सबको यदि पीने का पानी दे रहे हैं, यस, जो जिनको भी एलपीजी सिलेंडर नहीं है सबको हम दे रहे हैं, एक ही बार देते हैं, एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन दे रहे हैं। और इसके बाद राज्य सरकारें जो है तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या इसके लिए बधाई और धन्यवाद नहीं देना चाहिए? इसके बाद आप आइए सर, 2-3 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं कि आज दुनिया की इकोनॉमी क्या है। मैंने जैसे कहा कि चाइना बड़ी ही बुरी स्थिति में है, यूरोप की हालत खराब है, और कई एक जो चर्चा होती है सर कि हमारे यहां आज ही ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सर, ये वर्ल्ड बैंक कहता है 6 दिसंबर की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और वो कह रहा है कि इंडिया बेटर पोजीशन टू नेविगेट ग्लोबल हेडविंड्स देन अदर मेजर इकोनॉमीज। दुनिया में यदि कोई सबसे अच्छे इस इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है सर, ये रिपोर्ट किसका है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, कोई भी ऐसा दुनिया का बैंक नहीं है जो कि ये भारत को मेजर इकोनॉमी नहीं कर रहा है या हमारे माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद नहीं दे रहा है। और उसके पीछे रीजन है सर, अभी फिस्कल डेफिसिट, ये इन लोगों को ठंडा करिए सर, ये लोग सरकार वरकार तो बनाएंगे नहीं, केवल हल्ला कर रहे हैं सर तेलंगाना वाले। ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं सर,
नहीं, ही इज फ्रॉम तेलंगाना. रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना. सर वो लोग, उन लोगों को या तो बाहर कर दीजिए या यहाँ बैठा दीजिए सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं. रेवंत रेड्डी इज फ्रॉम तेलंगाना. ही इज माई फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई नो. ही इज फ्रॉम विद्यार्थी परिषद एंड सिंस विद्यार्थी परिषद डेज आई नो ही. सर फिस्कल डेफिसिट की बात जो है शशि थरूर साहब ने की. इन्फ्लेशन की बात होती है, फिस्कल डेफिसिट की बात होती है. मैं ये आंकड़ा लेकर आया हूं सर, ये 1960 से 1960 से अब आप समझिए कि जो कांग्रेस का शासन रहा सर, मतलब हमने क्या किया है इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी कितने बधाई के पात्र हैं कि 1966 में 10.80 इन्फ्लेशन रेट था सर. 1964 में 13.36 था सर. 67 में 13.06 था. कांग्रेस अब जब आती है क्या क्या होता है आप ये देखें सर. जब 1974 आया, जबकि इमरजेंसी लागू हो गया, जब पूरा लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, तो 1974 में सर ये 28.60 था. जब 1983 में इंदिरा जी बड़ी पीक पर थी अपने, तो 11.87 था सर. जब नरसिम्हा राव जी और माननीय मनमोहन सिंह जी, जिनका कि पूरी दुनिया लोहा मानती है और हम भी मानते हैं कि उन्होंने लिबरलाइजेशन करके एक बड़ा काम किया, 1995 में ये 10.22% था सर. और जब बड़े ही होशियार और होनहार, जो आजकल इंडियन एक्सप्रेस में बड़े बड़े आर्टिकल लिखते रहते हैं, चिदम्बरम साहब जब इस देश के वित्त मंत्री थे 96-97 में सर, तो उस वक्त 13.23 था. क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया सर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है, उसके लिए एक बड़ा एमनेस्टी स्कीम लेकर आए. और वो आज भी जो है पूरा देश जो है उसके लिए, जो टैक्स पेयर, जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, आज भी वो परेशान हैं कि ये कैसा एमनेस्टी स्कीम लेकर आए. यदि ऐसा ही स्कीम आता है कि आप भारत सरकार को पैसा नहीं दो, क्योंकि आज जो हमारा सिचुएशन है सर, और मैं वित्त मंत्री जी को उनका बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं इन्फ्लेशन खत्म करके, कि आज हमारा जो इन्फ्लेशन है इतना होने के बाद भी केवल 5.13%. क्या इसके लिए इनको बधाई नहीं देना चाहिए? इन्होंने जो काम किया सर, कि आज जो टैक्स कलेक्शन है, जो टारगेट इन्होंने 14 लाख करोड़ का फिक्स किया था, वो आप समझिए कि 25% एक्सीड कर गया. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बिना इकोनॉमी के ही एक्सीड कर गया. 17 लाख 18 लाख करोड़ हो गया. जीएसटी जिसका कि टारगेट जो है 1 लाख 1.25 लाख करोड़ हमने फिक्स किया था, वो प्रत्येक महीने जो है वो बढ़ता जा रहा है. वो 1.5 लाख करोड़ भी कभी कभी एक्सीड कर रहा है. क्या जीएसटी का कलेक्शन जो है, इकोनॉमी बढ़ रही है, या हम इसके लिए हमको इनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए हमको माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? तीसरा सवाल यह है कि यहां सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके लिए मैं 2-3 सूचना देना चाहता हूं कि यह सरकार ने क्या काम किया है. और इस बजट में 12,000 करोड़ रुपया का एक प्रोविजनिंग लेकर आई है भारत सरकार रेलवे के लिए. आज तक जो रेलवे बना सर, वो रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी से बना. रेट ऑफ रिटर्न की पॉलिसी अंग्रेजों ने बनाई थी. 150 साल, पौने 200 साल से किसी भी सरकार और किसी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह देखने का काम नहीं किया कि जो गांव गरीब पिछड़े लोग हैं, आदिवासी जगह के लोग हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनको जो है रेल की सुविधा कैसे मिले. क्योंकि पिछड़े इलाकों में रेल वहीं गया, जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जहां की राजा महाराजा बहुत मजबूत थे, और उन्होंने बिना रेट ऑफ रिटर्न को देखे हुए, चाहे आप राजा महाराजा को जितनी भी गाली दी, उन्होंने आम जनता को दिया. यह बात मैंने यहां कही. माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी और खासकर माननीय वित्त मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो रेलवे ये गति शक्ति का जो प्रोग्राम लेकर आई है माननीय वित्त मंत्री जी, और उसमें जो ये 12,000 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है. अब आप समझिए कि जो भी पिछड़ा इलाका है वो क्या कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर EIRR क्या है, आर्थिक आधार पर यदि हम वो रेल लाइन बनाएंगे तो उससे हमको गरीबों को हम कितनी बड़ी सुविधा प्रदान कर रहे हैं, इसके आधार पर अब रेल लाइन बन रहा है. और मैं उसका सबसे पहला जो है उदाहरण हूं कि मेरे क्षेत्र में एक रेल लाइन गोड्डा टू पीरपैंती जो बनते बनते रुक गई थी, राज्य सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया था. तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का
आभार प्रकट करना चाहता हूं, रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1400 करोड़ रुपया, पहला ऐसा प्रोजेक्ट है झारखंड में, झारखंड बनने के बाद, कि 1400 करोड़ रुपया भारत सरकार ने यह तय किया कि हम ही देंगे पैसा और रेल लाइन बनाएंगे। और आज जिस तरह की नेशनल हाईवे बनता है, सभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और देश के लिए मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि अब आपके यहां भी जो वर्षों से, क्योंकि कांग्रेस का जो ये नीति रहा कि पहली बार बजट में घोषणा कर दो, 5 साल के बाद जो है उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू करो, उसके 5 साल के बाद पैसा दो, और उसके 5 साल के बाद यदि बनेगा बनेगा। क्योंकि मेरे यहां एक सुल्तानगंज टू देवघर रेल लाइन है सर, जो आज से 30 साल पहले अनाउंस हुआ है, उसका लैंड एक्विजिशन तक नहीं हुआ है। जो आपने जो है जनता को गुमराह करने शुरू किया था इस देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके जो खत्म किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं, और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। और आप लोगों के यहां भी यदि कोई रेल लाइन बनने का होगा तो आर्थिक आधार पर यह रेल लाइन भारत सरकार बनाएगी, और उसमें इस बजट में जो है ये बहुत बड़ा प्रोविजन किया गया है। जो दूसरा और बड़ा प्रोविजन है सर, वो प्रोविजन है टेलीकॉम। टेलीकॉम में यदि भारत सरकार का BSNL यदि अच्छा काम नहीं करेगा, और क्या सिचुएशन था मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि सभी जगह 4G हो गया, BSNL 4G में नहीं गया, MTNL कैसे डूब गया, मैं उसके तह तक नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें उन्होंने 13,000 करोड़ तक का प्रोविजन किया है। पूरी दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी भारत ने लॉन्च की, शहर में जो है वो रोल आउट हो रहा है, और ये केवल और केवल भारत के जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो लड़के हैं, क्योंकि जब भारत सरकार ने तय किया कि चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, चाइना का इक्विपमेंट नहीं आएगा, आज 5G लागू हो गया और 5G जगह जगह जा रहा है। और 5G सरकारी कंपनी में चालू होगा, BSNL को वो उसको देने को तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको सब कुछ देने को तैयार है। उसके लिए 13,000 करोड़ सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5G टेक्नोलॉजी यदि चालू हो गई, यदि मान लीजिए प्राइवेट में ही चालू हो गई, यदि सरकारी में चालू नहीं हुई, यदि भारतीय वैज्ञानिकों ने किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि बधाई धन्यवाद नहीं देना चाहते हो तो कम से कम वैज्ञानिकों को तो दे दीजिए। क्या नहीं देना चाहिए? अंबानी को दे दीजिए, अडानी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए, लेकिन यह तो कहिए कि भारत ने 5G टेक्नोलॉजी आगे किया और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपया जो है इसमें बजट में प्रोविजन है। ये सारे जो बजट के जो एस्टिमेट हैं सर, अब आप समझिए एक और जो बड़ा है कि हमने लगभग जो है 80,000 करोड़, जो महत्वपूर्ण है सर, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस बजट में 80,000 करोड़ रुपया दिया। कोरोना के कारण मैंने जैसे आपको कहा कि पूरी दुनिया तबाह रही थी, समस्या ये थी कि लोगों की जो है जान बचाना, क्योंकि सबसे हमारे यहाँ कहा जाता है सर, जितने भी अमीर है पहले से, कि यहाँ भी पार्लियामेंट में लिखा है कि ऐंग निजा परो व्यक्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तुंग वसुधैव कुटुंबकम। भारत सरकार का जो एक नियम है और जिस श्लोक के सहारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते रहे, वो ये है कि ओम सहना भत्तु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवा वहे तेजस्विना मदीद वस्तु मां विद विषा वहे। तो गरीबों की सेवा करना इस सरकार का सबसे बड़ा फर्ज था। और कोरोना के बाद मैं वित्त मंत्री जी को फिर से बधाई, बस 2-3 मिनट में मैं खत्म करूंगा, बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जो काम किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लगभग 80%, 82% जो लोग हैं उनको लगातार हम कैसे सुविधा मिले, कैसे उनका पेट भरे, कैसे उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और इसके लिए 80,000 करोड़ दिया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभारी हूं। केवल 2-3 चीजें मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं। आज ही एक जवाब में जो है ये रेवंत रेड्डी के जवाब में जो है ये डॉलर के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कई एक ऐसे कंट्री हैं जिसमें कि रुपया एप्रिसिएट हुआ है। डॉलर यदि आगे बढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की इकोनॉमी आगे नहीं जा रही, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है। और जिस तरह से आपने इसको आगे किया है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। केवल एक चीज जो मेरा विषय है, जो मैं हमेशा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करते रहता हूं कि जो हमारा कंसर्न था क्रिप्टो करेंसी पर, जब मैंने आज 1.5 साल पहले बात किया था इसी पार्लियामेंट में, तो हमने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये ट्यूलिप मेनिया का पार्ट है और ये चिट फंड और क्रिप्टो करेंसी में कोई फर्क नहीं। कई एक लोगों को लगता था
कि ये युवाओं के खिलाफ जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया यूएन से लेके G20 तक जहां जहां आप गई हैं, आपके कंसर्न को देखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें आग्रही हैं कि इसमें टेरर का मनी है, इसमें ड्रग्स का मनी है, इसमें इलिसिट मनी है और बेसिकली ये पूरा का पूरा चिट फंड कंपनी है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब आप डार्क वेब पर है, जिसको कि हम कंट्रोल, उदासी साहब यहाँ हैं जो कि हम लोग लगातार इनको आगे बढ़ाते रहे, मेरा आपसे केवल आग्रह रहेगा कि आपने इकोनॉमी को इतनी मजबूती दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी मजबूती दी है, अब ये क्रिप्टो को जो है कंप्लीट बैन करने का समय आ गया है। क्रिप्टो को बैन करिए। आपने मुझे मौका दिया, आप ये सप्लीमेंट्री बजट लेकर आई, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, हम अपने प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बुरी परिस्थिति में भी आपने 130 करोड़ लोगों की जान बचाई। आपको पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Thiru Dayanidhi Maran. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on supplementary demands for grants for 2022 and 2023. Sir, the Finance Minister has put forward an additional gross expenditure plan for almost worth 4.36 lakh crores. Because of your higher receipts and savings from existing outlays come up to 1.1 lakh crores. Hence, the government is seeking Parliament's approval for a net cash outgo of 3.26 lakh crores as supplementary demands. So these are mainly going towards higher subsidy bills, especially 3 Fs, sir. Fertilizers, food and fuel, which are taking a chunk of out of the demand. So fertilizers alone, our Finance Minister is now going to give a additional subsidy of 1.09 lakh crores. So this expenditure rose, especially, sir. Our Finance Minister, in our reply, will definitely say this is not in our hands. This is because of the global scenario, because these are all out of our means, because of the war with Russia and Ukraine, and because of global scenario, our hands are tied, and hence she was forced to increase the subsidy. So, yes, sir, we have to accept it, that, sir. Because whatever explanation she gives it last, so that we can't give our counter argument, and always she gets the last word. We accept it, sir. But, sir, when my good friend Nishikant Dubey spoke, he was talking about that this government has brought nano fertilizers. Sir, we are very, very happy you're bringing this subject. Sir, my colleague, Mrs. Kanimuri, is also a chairman of the Fertilizers Committee, and she had given a report to the government saying that nano fertilizers is the way to go. But, sir, who was producing the nano fertilizers in India? Only one company, IFCO. IFCO is the only company which is producing nano fertilizers, which are not enough. Sir, to distribute the nano fertilizers, we need drones. A drone technology so that, sir, in fact, it's very good, sir, because where you use one bag of fertilizer, regular, normal fertilizers, you just have to use a handful of nano fertilizers which directly get absorbed by the plant. Sir, but now the same thing has to be distributed by hand. It takes more than 2 to 3 times that. So, if the government was so serious, my colleague has said, then they should have got all out. They should have increased the subsidy and made sure all the other fertilizer plants switch to nano fertilizer. But, sir, what do we do? What does NDA government do? Sir, they sell. Today, we have a Bengal Chemicals, which is a profit-making fertilizer company. So what do we do, sir? We sell it. Sir, instead of focusing on nano fertilizers, we are only selling all our good fertilizer companies, sir. And naturally, where are we making in India? The very fact that our Prime Minister says we make in India, everything should be made in India. Sir, all along, we are still handicapped, dependent, purely dependent on our imports. And this theory, there's no full stop to it. If they have 8 years they are in government, they should have had a fast side. You had the lead. You had the best brains. You should have found a solution. Sir, and for the food subsidy, sir, nearly 80,000 crores for the Department of Food and Public Distribution, sir. Nearly 3/4 of this is going for the government's Pradhan Mantri Gharib Kalyan Anna Yojana, sir, which was started to give free rations during the COVID, sir. Sir, we welcome that. It was a very good scheme because during the COVID, people were suffering. They gave it, and they were very, very clear that this will stop after COVID pandemic stops. But, sir, they can't. Because our finance minister is using this as a tool to fight inflation. She knows that because the high prices which are in the market,
She has to do it. And more now, the elections are going to come, sir. But I'm saying, I'm appreciate. We are for it. We are for it. We say we should give more, sir. Because they are the ones who come and go in public and say they are against subsidies. Subsidies is what killing the nation. So we never said that. We always said the poor needs us. As long as poor people are there, it is the duty of the government to ensure they are taken care. That is the way principle of the Dravidian model, and that's how we go forward for it. You are double-tongued. You say one thing when during the elections times, and after the election, when you have to win, everything is rushed again inside, under the carpet. So, next F, sir, fuel. So, all the three Fs affects the common man directly, sir. So, 22,000 crores that we pay to the oil marketing companies, sir, for the subsidy of the gas. So, this is where we have been talking, and sir, all the parties, political parties have been said, when the Prime Minister came forward and said that please give your concession gas so that a poor woman in a village who is cooking with firewood we can wipe out her tears. Sir, today the prices of gas is more than 1,200 rupees. Sir, and what is happening? Every woman, including your wife, is crying because the gas price is so high. So this has to be brought to them. Sir, here, I really appreciate the government, sir. For the first time, I appreciate it. They were so smart, even though the previous argument of global war, the global price. Now, sir, we were smart enough to understand and use our good friendship with Russia and get the cheapest price in oil, which every other country could not get. So the price of oil really reduced for us. Sir, even then, that benefit has not been passed to any common man. It is only going back to the checker. Sir, during the COVID period, sir, when the price of oil really went down, sir, our union government mopped up 1.8 lakh crores. Sir, in fact, our finance minister in a question, for a question, written answer, has said that 2,10,282 crores was mopped up for fuel excise, cess and excise for 2018-19, 2,90,750 crores for 1920, and 3,71,000 crores and 3,71,908 crores for 2020-21. Sir, the government is making huge windfall because the price hike. Sir, poor men, common men are paying as fuel because everyone is dependent on petroleum products on one way or the other, and the government is mopping up. So, in fact, as Indians, we can proudly say, Indians never received free COVID vaccine injection. They paid for it. They paid for it through the cess and excise collected by this government, which came back as free. So we paid for it. So you don't take the credit. The credit will go to Indian, the common man, sir. Sir, we saw, sir, the government which was collecting so many fuel on revenue on excise, sir. November last year, for Deepavali, sir, they slashed the prices. And they were brag-beating about it. We have brought the prices down. What did you state governments do? They have been increasing the price every month. They have forgot that. Even in the finance minister's answer, she said, what did your state do? But you have been increasing every month. We also did our part because we have a very less, your area is very, very big. Sir, but before the 5-state elections, sir, they reduced the price. And that was a Deepavali gift, so that they could win the elections. Sir, now, one wonders whether the fuel price are controlled by the markets or by the government. So you say that the fuel prices are controlled by the market related. When the international price, sir, today, in March of this year, sir, the international price was $129. So today, the international price of barrel of oil is $76. There's any price reductions of the last 200 days. There's not been a big price reduction. Sir, we know why. Because the elections just got over. They ensure that the Gujarat elections gets over. They ensure that, sir, if it's really market-driven, when, sir, everyone knows that if the market price is $76, sir, the Indian basket is $10 less. Mr. T.R. Bal, my leader, knows that when he was a finance minister, when he was a petroleum minister, this was the way. So it is technically $66. Sir, where is the benefit for the common man? If you really want to control inflation, finance minister,
should reduce the burden, sir. Everyone is now crying by using fuel, sir. Sir, today we are buying fuel 18.5% from Russia, which is only second to Saudi Arabia. We have made sure, sir, when throughout the world, every part of it, from USA to UK to Europe, are suffering with high price of fuel. The only country in the world which has got the lowest price of fuel is India. Even then, sir, no benefit for the common man, sir. So, in fact, sir, I should say, sir, because of this, Indians are paying in a different way. So, for young students who are planning to go to US, or young people who are going to work for US, their visas cannot come within the stipulated time. It takes nearly 3 years because the other NATO countries have decided to punish our Indian students by ensuring that they don't get their visa on time, sir. Sir, in fact, I was very, very happy because my good friend Nishikant Dubey has said that about the 5G, that India has a homegrown technology. So it's a proud movement, sir. In fact, our finance minister, when she had gone to US, she said she is ready to give the homegrown 5G technology, transfer it to developing US or UK, to all the foreign countries who want to benefit out of our 5G. Sir, it was a proud moment, very proud moment for me that our finance minister offered this to that. So to show that our own homegrown 5G technology is so good. But why can't you give to BSNL and MTNL? You can't even give it 3G or 4G to MTNL. But you want to give 5G to the entire world. The 5G is, sir, this is all, sir, this I have to say, sir. Sir, the next is, sir, Manrega. Sir, as my good friend said that it's a very bad scheme because for only one reason, UPA brought it. Whatever UPA brings is a very, very bad scheme, sir. It's not at all good for the country. But today, sir, 45 crores, sir, today, sir, the rural development will get allocated increase of more than 45,000 crores with an additional 16,400 crores to be earmarked, providing additional funds for Manrega and 28,000 crores for others and the aids. Sir, when you say this is a bad scheme, why are you supporting it? Simple thing, sir. They have failed. The NDA government has failed in providing employment. The NDA government is not providing any skilled employment. So the only way to keep employment under control is going back to Manrega and ensuring you work in the farms. We are giving you the money. So this is what, sir, I'm sure that if they have data, they would have definitely come and given it to us, sir. See, this is the data which we have, sir. Sir, I'm sure that, sir, I've always with the thing that, sir, rural should get the best help and more employment should be given to the rural people, sir. Sir, in the subject side, I would like to say, sir, railway, sir, about 10% of the sum is going towards capital expenditure sector like roads and railways, with allocation of 12,000 crores for the railway. Sir, in my constituency, sir, we have the Elephant's Gates Bridge. For 9 years, the bridge has been closed. So, sir, my chief minister, M.K. Stalin, has spoken about in the assembly when he was the opposition leader. We have been trying to, sir. Till now, sir, nothing is happening. See, it is the most artery road connecting the North Chennai to the other parts of the Chennai, sir. Severe traffic jam is there. Sir, lives has to be changed, saved. Sir, several lives are getting killed. People are getting killed because in the suburban trains, because with the overcrowding, and since we are from Tamil Nadu, less trains have been operated, and sir, no automatic doors have been provided. Sir, if they only provide automatic doors closed, sir, there will be no people standing on their footboards, which can save lives, sir. I request that, sir, the finance minister allocates to or instructs the railway ministry to do something about it, sir. And more, sir, I do not want to say anything, sir. Sir, the nation will remember our finance minister's response. Rupee is not sliding. US dollar is strengthening. So I would like to set my differences aside and aside with the statement and ask a simple question to the finance minister. Sir, did the government utilize the $I exports? Sir, when we are usually, it's a common sense that when the dollar price increases, exports should also increase. This has been a common thumb rule which there. So if you look at all the net imports and the net exports, there lies a very sad story. Despite all the talk about Make in India and the promotion of manufacturing, there were only hollow promises and empty words.
Sir, India's trade deficit widened to $26.91 billion in October, with exports down to 17%, and imports during October increased to 56.69 billion against 53.64 billion in October 21 as of the previous year. So the growth of the dollar, the rise in the dollar, should have reflected positive. So you are from Andhra, Telangana. So positive in the IT sector. But Andhra, sorry. I correct myself, sir. Andhra. So so you should say refer to the IT sector. But there too also we see bad news. So the Nifty IT index has plummeted almost 24% so far in 2022, putting in all the bad signals, sir. So as far as the railways, sir, it has been a tradition the last 8 years to ignore Tamil Nadu, sir. Always, sir, my founder leader, Sir Anna, always said, Vadakku vazhigirathu, Terkku theigirathu. The same thing is happening, sir. All the railway projects are going to the northern part of the country and southern part, especially, sir, our part. Your state, sir, and my state are suffering, sir. So, in fact, I like to say, request through the finance minister, sir, in the coming budget, sir, please include Tambaram Chengalpattu lines of this, which where always a proposal is being given for 600 crores, sir. Sir, again, Attipattu Gumudipudi, third and fourth line, sir, for cost of 500 crores. New lines from Tirupattur, Krishnagiri and Osur at a cost of 1,486 crores, sir. Doubling of Arakonam, Kanjipuram, Chengalpattu line at 1,360 crores, sir. Vande Bharat train from Chennai to Madurai. Vande Bharat train from Chennai to Coimbatore, sir. Sir, again, sir, I would like to emphasize to the finance minister the credit line guarantee scheme for MSME in the garment sector. The garment sector, sir, especially Tirupur, is facing severe hardship, sir. We are, sir, totally, sir, after post-COVID, they are really suffering, sir. There's been a sharp incline month on month in the growth rate as a result of the COVID and Russia-Ukraine war, sir. Lakhs of jobs, particularly for rural women who significantly depend, have gone. I urge the union government to announce a special emergency credit line guarantee scheme for the MSMEs in the garment sector with 20% additional collateral credit free in the upcoming budget. Sir, in Tamil Nadu, sir, after our chief minister comes, sir, Tamil Nadu is now progressing so well, sir, and we need your support as well. And we have been always a progressive state, sir, in Tamil Nadu, and our chief minister, M.K. Stalin, is ensuring that everyone comes and invests in Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu is the first international furniture park in the country, sir. The furniture industry is a fast-growing industry with high potential for employment generation. Reduction in duties on imported wood will support in attracting more investment in the sector. Further, it will increase India's competitiveness in the international furniture market, sir. So I request the union government to reduce the duties on imported wood to attract investment in this sector, sir. Sir, again, PLI. Sir, you have got a good scheme, the production-linked incentive schemes for leather sector, sir. Leather sector, sir, again, Tamil Nadu comes from, sir, we are the largest finished garments, finished leather, and we are dependent on leather, sir. And leather exports contribute to our country also, sir, where we all live together. Sir, I would like to request finance minister to extend the production-linked PLI scheme for the leather, non-leather footwear sector, and for the green hydrogen and electrolyzer manufacturers, sir. Sir, Chennai Metro Rail Phase 2, sir. I urge the union government, sir, the government of Tamil Nadu, thanks the union government for recommencing the loan negotiation for Chennai Metro Rail Phase 2 project as a state sector pending approval of the Union Cabinet for Government of India's participation in this project. I urge the union government to immediately sanction the project as a 50-50 equity share between the Government of India and Government of Tamil Nadu and ensure adequate provisions are made in the Union Budget 2022-23. So, my good friend spoke about aims, and after our Prime Minister, a lot of aims have been built in the cross-country. Sir, but Tamil Nadu comes with a very sad story, sir. See, already my leader has spoken about aims. Only a compound wall has been built, sir. Sir, the state has the state has been accommodating. Sir, in fact, sir, there's an illegality in the functioning of aims in Tamil Nadu, sir. Finance Minister knows that if anyone has started a medical college, they have to have the infrastructure before admitting students into the college. Sir, ma'am, there's some abnormality is happening. The first time, because this aims, permission has been granted, students have been admitted, professors have been taken,
but there's no infrastructure. In fact, the state government has given permission to use premises of Medical College Ramanathapuram temporarily to accommodate 50 students. And the irony, ma'am, these 50 students will complete a degree without even stepping their foot in the newly constructed AIIMS. They'll be graduating from Ramanathapuram. Now, ma'am, this is, we request you on part of Tamil Nadu. So, ma'am, I know it's a JICA project. There are a lot of, let's speed up, ma'am, because the Honorable Prime Minister came and laid the foundation stone, and it's quite irony that nothing is happening. When you talk about AIIMS, this is a sad story which we would like to highlight for you. Sir, again, sir, on behalf of Tamil Nadu government, I have certain demands, request to make the Finance Minister. I thought this will be the right opportunity to take, I think, sir, on Civil Supplies Department, the CMR subsidy for 2018-19 to 21-22, around 5,903.48 crores still pending with you, madam. Please ensure that you give it to Tamil Nadu. Sugar subsidy from January to September 2022, 31 crores still pending. And fortification of rice, 7.3 crores. Intra-state movement of PDS, PMGKY from 2022-2022, 251.04 crores is pending. Interstate movement NFSA from November 2016 to 2021, 621 crores are still pending from the Union government. Of this, Civil Supplies Department alone, we are 6,814 crores are pending from your side, ma'am. We humbly request you to expedite the process. And the Finance Commission's grants for urban local bodies for 2022-23, this Million City Plus, the utilization certification for the year 2021-22 have been sent to the Government of India, and all conditions have been complied to avail the grant for the year 2022-23. The Government of India is yet to release the grant. For air quality, we still release of 122 crores, and SWM sanitation 313 crores, and again for the non-million plus cities tied 550 crores, untied 370 crores, for total of 1,360 crores are still yet to be released after giving all the utilization certificates from the Tamil Nadu. Ma'am, GST compensation, and every time we have to make a request for 2020-21, 5,000 crores is pending, ma'am. For 2021-22, 2,098 crores, ma'am. For 2022, 23, April-June, ma'am, around 3,675 crores, ma'am. A total of 10,879 crores is still pending. Ma'am, I request you that to consider Tamil Nadu, and before I end, I like to say, strong states make a strong union, and expect you to make all the states strong. Ma'am, it's not only good that you make Gujarat strong. Make every state, every Tamil Nadu strong, and make sure that southern India doesn't get deprived. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity. Shri Saugataraji. Sir, I like to speak on the supplementary demands for grants. This is not an opportunity to criticize the minister or any other ministers. This is an opportunity to take a stock of the economic situation in the country. Sir, there is a total supplementary grant of 39.45 lakh crores. Out of this, 1.1 lakh crores go towards fertilizer subsidy. And it has been mentioned that this is due to rise in urea prices in the Ukraine-Russia crisis. Extension to Garib Kalyan Yojana will cost 44,000 crores. More capital needed for general insurance as their solvency margins have dipped. Sir, 1,80,348 crores towards food subsidy, including Garib Kalyan Yojana, which is a good scheme. For petroleum, though we are buying the cheapest petroleum in the world, still 29.9 lakh crores extra subsidy. Rupees 13,669 crores towards telecom to bring 5G to Jio, not to BSNL and MTN. 12,000 crores in railways, good thing.
Only you have to be careful that the Vande Bharat trains do not collide with cattle. You must find out a technical solution to this cattle problem. Rupees 10,000 crores towards GST compensation. CapEx, capital expenditure, has been augmented by rupees 31,000 crores. Now, nobody can have any quarrel with this demand. This is necessary. The government will have to spend it. But if I may remind the finance minister that 2 years ago, we had the corona pandemic. We saw pictures of migrant labor walking to their village homes, all on foot, dying on the road, being run over by railways. Abhijit Vinayak Banerjee, the young economist who is a Nobel Prize winner, suggested that these people should be given a cash subsidy of at least 10,000 crore. This cash subsidy of 10,000 would not only put money in their hands, allow them to buy a few things, that would also allow the economy, the money to circulate. The finance minister remained impervious to this plain demand of the most hapless people that I have seen. It is worse than any migration in the history of mankind. This did not happen. Sir, now we'll have to discuss about the economic situation. How is the economic situation under Finance Minister Nirmala Sitharaman? I would say that India as a country has withstood the headwinds. Throughout the world there has been economic recession. The Russia-Ukraine conflict has affected the world economy. And it is said, when our rupee is falling against the dollar, some people have said that even the yen is down. Chinese currency falls 15%. British pound has fallen by 17.7%. So it's a general problem. But I have not had one statement from the government to say what they are doing to improve the rupee's value vis-a-vis the dollar. Government has remained totally silent to this, and now economists are saying that it will remain flat. It's now 81.1%. I remember a few years back, it was 45 rupees to a dollar. Now it is 81 rupees. The government has not expressed the concern that it should have in this matter. The other thing is with regard to GDP growth. Any country's economy is measured by GDP growth. World Bank estimates GDP growth for FY 23 at 6.9%. Now, this will depend on whether inflation will moderate. Inflation was 6.77% in October 22. It came down a little compared to 7.41% in September 22. The rise is mainly in food. And I saw the very pleasant picture of the finance minister going like a common housewife to a market in Chennai buying vegetables. She must have realized how bad it is for the common middle class people who are hit by inflation. The Reserve Bank has repeatedly raised the repo rate, the rate at which it lends to bank, but it has failed to control the inflation. I admit that it's not a runaway inflation, but it's inflation all the same, and it is having an impact on the common man's pocket. The other thing is that agriculture has been, RBI's tolerance band was 6%. We have not been able to reach RBI's tolerance band.
WPI was slightly, wholesale price index was slightly down to 8.39 in October from 10.7 in September 22. Inflation, as I mentioned, is 6.77% in October 22. Have we left to the Reserve Bank alone, through their monetary policy, to control inflation? Or does the government have anything to say about inflation? I've been hoping, I read the papers every day, expecting the finance minister to come out with a bold statement. I don't see it. I see the Reserve Bank governor speaking more than he should, but never the finance minister speaks anything about inflation. The other thing that I should mention, that the core sector is in a bad way. Its growth slowed down to 0.1%, 20-month low in October. Urban employment is still very high. Unemployment rate rose to 8% in November, highest in 3 months. Urban employment rate rose to 8.9%. I have not seen a single statement from the government as to what they are doing vis-a-vis the employment situation. Yes, I say that some steps taken by the government were good. Capital expenditure stood 46.8% higher than the same period last year. The GST revenues have increased significantly. And a good side is that MGNREGA declined in October by 7.5%. That means less people are going for this wage employment. There is more buoyancy in the rural areas in agriculture, which is a good thing. But again, sir, ours seems a roller coaster ride. Good in something, bad in something else. Like merchandise exports fell to a 20-month low in October 22. Exports are at the worst, and Indian rupee depreciated 2.6% against US dollar. Sir, what I want to say is that our economy, yes, the global headwinds are not nice. Indian economy has shown resilience. Overall, agriculture has been excellent. For 2 years, we have had good agricultural production. Our farmers have shown a lot of strength. But we are claiming to be the third biggest economy. We are already the fifth. And $5 trillion economy by whenever 2027-26. But our GDP growth has slowed to 6.3%. Fiscal deficit at 45%, 45.6% of a full year's target already in October. Manufacturing sector, I told you, has declined. It needs policy support from the government. None has been forthcoming. Services sector alone, trade, hotel, transport services, they have kept our post-COVID situation, they have kept up the growth momentum of the economy. They need to be congratulated. So, we need to think out of the box. Main problem is this percentages mentioned do not fill the common man. Two primary problems, one inflation, the other unemployment. Job creation has slowed down after uneven recovery. The other sector which needs the finance minister's attention is the banks.
I saw a statement, I don't know whether it's economically correct. He said NPS up by 365% under PM Modi. That is Mr. Kharge's statement, I don't know. You will clarify. But in the last 5 years, 10 lakh crores were write-offs to keep banks half their NPS. So you have written off 10 lakh crores, and thus banks have halved their NPS. Banks have recovered only rupees 1.32 lakh crores from write-offs in 5 years ending March 22. Sir, the industry is pressing for two things. They have said decriminalize GST law, slow personal IT rates, lower personal IT rates. They say the industry, shrinking exports with high deficit call for a policy reboot. Food and fuel inflation must be controlled. Having said all this, sir, let me state quite clearly that Indian economy and the world economy is at a crossroads. Instead of boasting that we are going to be $5 trillion economy, we have to remember that globally, you see, the US tech companies, Twitter, Meta, they are all cutting down employment. This will also have an ultimately effect on Indian IT firms like TCS, Infosys, and Wipro. The manufacturing contraction shows why RBI should pause rate hikes. Having said all this, sir, I posed the main problems of the Indian economy before the finance minister. This is the last time he will make a detailed statement in the House before she presents the budget. I do hope that she has already started the pre-budget consultation. I do think that she will clear the cobwebs in our mind, our doubts regarding the position of the economy. And last point, I would urge the finance minister that be more charitable and fair towards West Bengal. She has no particular constituency to cater to. She is a Tamil, based in Andhra, stays in Delhi. So she can be fair to everybody. And now we have this huge dues from, and in upper house, from Karnataka, as Anish pointed out. So we have this huge pending dues from the central government. Some say it's 1 lakh crores, 7,300 crores in NREG alone. Huge amounts in House for All. I would request her. We don't have a full cabinet minister now in finance in West Bengal. There is a minister of state work. She can call and she can sort out some of the financial demands. And lastly, my friend Dayanidhi Maran mentioned the many projects in railways that were started. I would request the finance minister, you have given some extra money to railways, to Ashwini Vaishnav's effort for modernizing the railways, where Vande Bharat trains are being hit by cattle. We have many ready projects in West Bengal awaiting completion. The rest of the part of Calcutta Metro, including the suburbs, the Arambagh-Bishnupur line, all these lines are pending completion for a long time. We have been neglected. Now, elections are still, Lok Sabha elections are a year and a half away. It is the time to bury old enmities and
put the country on a pedestal to march towards a better country in the 75th year of our independence. Let us forget our old rivalries. Let the state, as my friend Dayanidhi rightly mentioned, strong states mean a strong center. On behalf of West Bengal, I plead with the Finance Minister to help us become strong in the state of West Bengal. Thank you, sir. श्रीमती I followed your शर्मिष्ठा सेठी Seriously. Government is claiming that it is confident of accelerated growth, and several international agencies see India as a bright spot amidst the adverse impact of COVID-19 and Russia-Ukraine war. This is a positive thing. But high unemployment, increase in the number of poor people, less private investment, decline in public sector investment, and record-breaking food inflation in recent times have affected all sections of society. Rupee is falling like never before. Now, in this situation, what corrective measures is the government taking? We have become the 5th largest economy, but at the same time, nearly 18 lakh children in India are severely malnourished. Dropout rate of children in primary school has increased from 1.9% to 3.02%. I am hopeful Honorable Finance Minister will address these issues in her reply. Sir, several state governments have taken initiative on their own to heal the wounds of the people. Odisha government, under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has taken many pro-people and pro-development measures. Some of them are as follows. So first, the state is leading in reducing poverty, and it has come down from 63% to 29%, while 80 lakh people have climbed out of the poverty line. So second, Odisha is the only state in India to have doubled farmers' income. Third, Odisha is increasing in steel production by nearly 10 times in the last 2 decades. Recent Make in Odisha conclave has generated investment intents of 10.5 lakh crore with potential for 10.50 lakh direct and indirect employment. Fourth, through Mission Shakti, government is working tirelessly to empower women to be model entrepreneurs and leaders. Fifth, Sir, Odisha is committed to provide a pakka ghar to every household. Odisha is the only state where beneficiaries are getting financial assistance not only for the construction of the houses but also for their repairing. Rupees 1,444 crore has been directly credited to the bank account of 31 lakh household beneficiaries under Biju Pakka Ghar Yojana for repairing of their houses. Sir, when developmental activities of such a large scale are going on, the people of Odisha also expect same support and cooperation from central government in a federal structure. In 2019, Centre has promised Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani for approval of 1.84 lakh houses under the special PMAY Gramin program. So many people had lost their houses in the 14 districts of Odisha, which were affected by the cyclone. People are still waiting for the central assistance. I request the central government to immediately sanction 1.84 lakh special PMAYG houses as promised to Odisha in the aftermath of cyclonic storm Fani, and also to open hours plus window to incorporate those who were not included in the list of beneficiaries under this scheme. Sir, delay in MGNREGA payment is another issue. Odisha is yet to get its dues of around 1,700 crore from the centre. Our Honourable Chief Minister has already written to Honourable Prime Minister to release the fund and also requested to review the provisions for the withdrawal, utilization and recoupment of budgetary allocation towards states revolving fund to prevent delay in payment of wages under MGNREGA. Odisha government, in order to address the distress migration in 20 migration-prone blocks of our 4 districts, namely Balangir, Bargarh, Kalahandi and Nuapada, has approved a new state sector scheme, State Support to MGNREGAs, wherein it has decided to provide additional 200 days of work over and above the guaranteed 100 days of work mandated under MGNREGAs Act 2005.
the entire cost towards the payment of wages beyond the guaranteed 100 days of wage employment under MGNREGA will be borne by the state government. When the state is being proactive in providing employment opportunities, non-payment of dues by the central government has become an obstacle. Through you, sir, I would like to request the government to take necessary steps as proposed by Honorable Chief Minister. Sir, Odisha has sought 60% of coal sales share from this center and also wants coal-bearing states to be assigned reasonably lower limits for the renewable power obligation, that is RPO. Further, renewable energy projects in the coal-bearing states should be funded from National Clean Energy Fund, NCEF. While the rate of royalty on coal has not been revised for more than 4 years, the central government has enhanced the clean environment cess on coal. Odisha's demand should be considered as the same, is based on merit. Sir, at present, GST on Kendu leaves has been fixed at 18%. Central tax on Kendu leaf was earlier 0. Considering the difficulties of the tribal people and the livelihood problems they are facing after GST, I request the central government to place the matter before the GST Council and reduce the GST on Kendu leaves from 18% to 5%. I also demand that Jagannath International Airport in Puri to be completed in a timely manner, and another airport may be considered in Jajpur, keeping in view of the importance of district from industrial, religious, and tourism perspective. That is my constituency also, sir. Further, I urge the government to add direct air routes from Bhubaneswar to Dehradun and Bhubaneswar to Sirdi. Tourists from Odisha visit religious pilgrimages in Uttarakhand and Sirdi, and vice versa. However, due to no direct flight connection between these cities is proving to be costly for the people. Direct flights would be cost-effective and time-effective for the people of Odisha. Sir, I will raise some issues of my constituency. Sir, Jajpur is famous for tourism. Vaishnav, Saiva, Sakta, all the tourist destinations are there in my constituency. Besides, the district has a rich legacy so far as Buddhism is concerned. I demand that these tourist spots to be developed with central assistance and Buddhist site be covered under Buddhist circuit. Ministry of Railway had announced that it would redevelop railway stations in Odisha. The ministry had narrowed down 12 stations in Odisha, namely Puri, Bhadrak, Barampur, Cuttack, Jajpur Keonjhar Road, Khordha Road, Rayagada, Sambalpur, Baleshwar, Jharsuguda, Raurkela, and Bhubaneswar. The ministry had said that modernization and redevelopment would be up to the international standards. An MOU was also signed between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway to construct a modern station building at Bhubaneswar at the cost of the state government. However, no steps have been taken by the Ministry of Railways to modernize the other 11 stations. I request the Ministry of Railways to put into motion the redevelopment and modernization of other 11 stations as well. Through you, sir, I also request the Honorable Railway Minister for urgent action on Jajpur-Dhamra line. Sir, to conclude, recently in Padmapur, Odisha, Honorable Railway Minister had announced that railway projects are pending because of lack of land under allotment. Once the land is allotted, projects will take off the next day. However, I have a question here. Why are the projects for which land has already been allotted still lagging and have not been completed yet? As on 1st April 2021, railway projects costing Rs 55,219 crore for 4,643 kilometers length, falling fully or partly in the state of Odisha were pending for completion. These include 11 new line projects covering a length of 1460 kilometers at a cost of Rs 20,346 crore. One GC project covering a length of 159 kilometers at a cost of 1455 crore, and 25 doubling projects covering a length of 3024 kilometers at a cost of Rs 33,418 crore spending. Different railway projects in Odisha are in incomplete stage. I request the central government to look into the matter. With these words, I conclude. Thank you. Shri Maluk Nagar ji.
धन्यवाद साहब, आपने बोलने का मौका दिया। और कोरोना महामारी के बाद देश जिन हालातों से निकल रहा है, उसमें देश जो तरक्की कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और भारत सरकार ने देश के तमाम उपक्रमों को, तमाम विभागों को बहुत सहायता दी, लेकिन किसानों को कोरोना कार्यकाल में उनकी फसलें सड़ी, उनके दूध फट गए, उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन देश की स्थिति ने और जो किसानों ने अपने आप को संभाला, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के काफी हिस्सों में गन्ना किसान हैं और गन्ने का रेट पिछले 7 सालों से केवल 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है, जबकि कोरोना कार्यकाल में पिछले 2 सालों में चीनी का रेट करीब 1.5 गुना और 1.25 गुना हुआ है। तो जो पिछले 7 सालों की सरकार के द्वारा बढ़ी गई महंगाई का जो आंकड़ा है, उसके हिसाब से भी लगाएं तो 7 साल में करीब 55 और 60% के करीब बैठता है। तो जो गन्ने का रेट 340 था और 350 केवल हुआ है, तो 1.5 गुना करके 500 से ऊपर बैठता है। तो एक तो गन्ने किसान के बारे में सोचा जाए, उसके खाद के भी रेट बढ़े, बिजली के बिल के रेट बढ़े, मशीनरी के रेट बढ़े, जीएसटी लगी, तो गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 500 रुपए क्विंटल प्रति करा जाए। और जहां से मैं आता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष जी, वहां मेरठ और आगरा और दिल्ली कभी बराबर की हैसियत में देश में हुआ करते थे। और कोरोना कार्यकाल के बाद में केसों की संख्या, कोर्ट केसों की संख्या इतनी बढ़ गई, इतनी पेंडिंग हो गई, यहां से इलाहाबाद जाने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। और जो हाँ लखनऊ और इलाहाबाद थोड़ी सी दूरी पे ही जो 2 जगह हाई कोर्ट है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को 12-12, 14-14 घंटे ट्रेनों में जूझ करके उनके सीटें नहीं मिलती, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में हाई कोर्ट की स्थापना कराने के बारे में सरकार जरूर सोचे। आज मैं ये मांग कर रहा हूं। और हस्तिनापुर है वहीं पे, अभी दिल्ली से मेरठ के लिए रेल चली है, तो मैं मांग करता हूं कि दिल्ली से मेरठ जो रेल गई है, उसको हस्तिनापुर और बिजनौर तक ले जाया जाए और सीधा उठा करके मेरठ से मुजफ्फरनगर को भी जोड़ा जाए, जिससे वहां की जो पूरा इकोनॉमी में जो योगदान है उसको देखते हुए उन लोगों को वंचित ना रखा जाए। और साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो वहां पे किसानों में ही जो पिछड़े आते हैं, जिनमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, वे तमाम दलित और अकलियत समाज के लोग वहां पे हैं और उनको भी न्याय मिलेगा। और 1-2 चीज में यहाँ पे वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कहना चाहता हूं कि सरकार एक अमेंडमेंट लेके आई, एक नया बिल लेके आई एनसीएलटी से रिलेटेड, सरकार एक बिल लेके आई रेरा से रिलेटेड। अब उसमें जो 100 लोग हैं और 2 लोगों को रिलीफ देने के लिए 98 लोगों को मार देते हैं, तो सरकार 2 लोगों को रिलीफ दे और को अच्छी बात है, लेकिन 98 लोगों को कैसे बचाया जाए इसके बारे में जरूर सोचें। और सही इसी पैटर्न पे रेरा में 4 लोगों को रिलीफ देने के लिए 96 लोगों को मार देते हैं, तो इसके बारे में जरूर सोचें, 4 को रिलीफ दें और जो बाकी बचे हुए 96 हैं वो ना मरें, उनके लिए कैसे उनको सुविधा दी जाए। अब मान लो एक कंपनी है और उसमें 4 लोग कोर्ट में चले गए रेरा के में या एनसीएलटी के में, और उन्होंने रिलीफ ले लिया कि इनके पैसे तुरंत वापस करे जाएं। कंपनी पे पैसे वापस करने को है नहीं, वो ऑक्शन लगा दी और सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोपोर्शनेटली प्रो डेटा बेसिस। तो जो 96 लोग थे वो सब मर गए। तो इसमें जरूर सोचें कि जो सरकार जनहित की वजह से जो दोनों इन लॉ को लेके आई है वो जनहित में नहीं है, कहीं ना कहीं शेडो दूसरी डाल रहे हैं। तो इस बारे में भी जरूर सोचें। और जो अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की आय डबल हो, तो मैं मांग करता हूं कि मेरठ में बिट्टू थैंक यू, कि मेरठ में एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए जिसमें किसानों को ट्रेंड करें
और जिसमें नए नए तरीके के फूल, नए नए तरीकों की सब्जियां, नए नए तरह की फसल और कैसे आय डबल हो, इसके लिए किसानों को ट्रेंड करे जाएं। अभी जो अपने बिट्टू भाई बिट्टू भाई बैठे हैं, जब ये पूरी चर्चा चल रही होती है कांग्रेस में अकेले बिट्टू भाई है, जब बैठते हैं भी एक और आ गए हैं, नहीं पूरी कांग्रेस खाली पड़ी होती है। तो सब मैं ये don't get distracted, go on with your speech. हाँ बस सब कंक्लूड कर रहा हूँ, बस एकदम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी दिन में हमारा एक प्रश्न था ट्राइबल यूनिवर्सिटी का, तो देश में 370 हटने के बाद जो देश में एक बहुत एक अच्छी शुरुआत हुई है, जम्मू कश्मीर में आज़ादी मिली है तमाम पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, और पूरा देश उधर देख रहा है। तो मैं ये भी मांग करता हूं यहाँ पे मंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर के जो एसटी में आते हैं गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल, उनके लिए भी जो देश की सीमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो सारे लोग हैं वो 29.4%, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे उनके बच्चे पढ़ लिख करके देश के लिए जो जान देते हैं, देश के लिए जो फौजियों की तरह लड़ते हैं, वो भी पढ़ लिख करके देश में अच्छी मुख्य धारा में आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री बीबी पाटिल जी। Chairman, sir, thank you. Sir, we find ourselves in the midst of the worst financial crisis that the nation has witnessed. Much has been said, but little has been done by the central government out of its complacency at this point, which will only reduce the global investors' confidence and look like a sign of the central government's fatigue, depression to the common man, who is looking towards the government for some sign of hope and relief. It is complicated maze of compliance and tax extortion that is leaving both the industry and the state with little ability to plan and implement growth strategies. The government of Telangana is getting tax and non-tax revenues as expected this fiscal year, sir. However, the central government is reportedly trying to disturb Telangana in grants and contribution in various ways. As a result, additional financial burden is being imposed on the state government. It is to be mentioned that only 85 crore was approved as a grant by the centre in October. However, because of state government's tax income, the development activities are going on without any hindrance. Telangana state was supposed to get rupees 40,000 crore in financial year 22-23 from the centre by way of fiscal responsibility and budget management (FRBM) rules. Initially, the FRBM was fixed to 54,000 crore, but later it was reduced to 39,000 crore by the union government, which resulted in direct cut of 15,000 crore. Based on the FRBM limit, the state government was planning to implement some welfare programs and schemes. Now all that has been derailed. Similarly, the centre announced 0.5% of FRBM to best performing states and also to those states which implementing reforms in electricity sector by fixing meters to agriculture pump sets, etc. As the state government has refused to implement power reforms, it has lost another 6,000 crore, sir. The state was also deprived another 20,000 crore assistance from various financial institutions for taking up irrigation projects and thermal power plants. Institutions such as Power Financial Corporation, Rural Electrification Corporation have not disbursed loans for the last several months on the ground that they come under FRBM limits, sir. I would like to state that under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, which provides special assistance for the development of 9 backward districts of Telangana under the BRGF. The central government has released so far rupees 450 crores in 4 installments each. The installment for year 19, 20, 21, 22, 22, 23, rupees 1350 crores are due for release. I request the government to kindly release the pending installments at the earliest. Even the Niti Aayog has recommended to the Department of Expenditure, Ministry of Finance and Government of India to release the said amounts. Secondly, Mission Bhagirath, which is the to supply drinking water to all the households in Telangana state, is a unique initiative to fulfill the basic needs of people, and this scheme is being lauded at the national level also. Telangana government has already projected the requirement for the operation and maintenance of the project around rupees 12,772 crores for the year 21-22. 25-26, considering the unique nature of the projects, for which our Honorable CM KCR Saab
has already submitted the representations to Finance Commissioner requesting additional allocation. It may kindly be taken up as no action has still been taken in this regard. Further, I would like to mention that the geographically terrain of Telangana is such that the major rivers like Godavari and Krishna flow deep below the ground level, and therefore irrigation is possible only with multi-stage lift irrigation schemes, which requires large capital investment as well as provision of operation and maintenance and power consumption. These lift irrigations are crucial for the improvement in the farmers' income and growth in agriculture, sir. Representation by our Honorable CM KCR, sir, has already been submitted. Finance Commission requesting additional allocation for 40,169 crore towards the operation and maintenance for lift irrigation projects. I request the government to kindly intervene and get the needful done, as this will help in farmers' income and growth in the agriculture. I urge the government to adopt consultative approach with the opposition parties, the state government and the industry representatives to boost confidence in our economy. It is imperative for us to analyze where we stand if the economy must revive. With these few words, I conclude, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. श्री श्रीरंग अप्पा परने जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। अनुदानों की मांगों पर मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया, इस पर मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, गए 8 सालों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में प्रगति पर काम कर रहा है और कई सारी योजनाएं जैसे कि रोड की या रेल की हो, तो में पूरे भारत में रोड का काम जलद गति से हो रहा है, लेकिन जलद गति से होने से क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। इस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। रेल विभाग द्वारा कई सारे काम मंजूर हुए, लेकिन ये काम धीमे गति से चल रहे। मेरे चुनाव क्षेत्र में करीबन 3-4 साल पहले तीसरा और चौथा ट्रैक को लोनावाड़ा से पूना तक मंजूरी मिली थी, लेकिन आज उस पर काम नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे काम हैं उस मार्ग पर, जैसे कि अंडरपास के, ओवरब्रिज के, वो धीमे गति से चल रहे। तो मेरी मांग रहेगी खास कर कि ये सभी जितने ठेकेदार काम लेते वो समय पर काम नहीं करते, वो समय पर काम होना आवश्यक है। कोविड काल में जैसे कि कई सारे ट्रेन पूना से मुंबई तक चलने वाली ट्रेन, दूरी की ट्रेन बंद की गई थी, तो उसमें से कई सारी ट्रेन चालू हुए, लेकिन आज भी कई सारी ट्रेनों चालू करने की आवश्यकता है। वहाँ करजत लोनावाड़ा में ट्रेन का ठहराव बंद किया है, वो भी चालू करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खासकर वित्त मंत्री से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा क्षेत्र पर्यटकों के दृष्टि से बहुत अच्छा क्षेत्र है, जैसे कि लोनावाड़ा, खंडाला, माथेरान जैसे हिल स्टेशन है, कार्ला, भाजा, घारापुरी जैसे ऐतिहासिक स्थल है, और शिवाजी महाराज के टाइम से वहाँ जैसे किले, कई सारे किले, तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। मुंबई और पुणे के करीब होने के कारण कई सारे पर्यटक दुनिया और देश में से आते, उनको सुविधा की कमी होने के कारण या पर्यटक आते नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अगर मिल जाती, केंद्र सरकार द्वारा वहाँ रास्ते की सुविधा देनी आवश्यक है, पार्किंग की सुविधा देनी आवश्यक है, और ये सुविधा अगर मिलती तो पर्यटकों को चालना मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूना और पिंपरी चिंचवड शहर महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़े शहर है, और इस शहर में जाने वाले पूरे जितने रास्ते वो नेशनल मार्ग है, और एनएच होने के कारण पुणे के करीब जैसे कि
पुणे से नगर रोड, पुणे से चाकन रोड जो सीधा चलता है नासिक तक, दूसरा कात्रज से कोल्हापुर लेके बेंगलोर तक चला जाता है, उस मार्ग पर अगर ओवरब्रिज बना दिया जाए एनएच पर तो निश्चित रूप से एक सुविधा प्राप्त होगी, जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो छूट जाएगी। दूसरा, पूना पिंपरी चिंचवड को ट्रैफिक की जाम समस्या ये भी होती है कि हिंजवड़ी जैसे आईटी पार्क, तळेगाव, चाकन इंडस्ट्री, ये बहुत सारे इंडस्ट्री हब है दुनिया के और देश के विभिन्न राज्यों में। कई सारे वहाँ नौकरी के लोग आते हैं और वहाँ अगर उस मार्ग पर, उस सेक्टर पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो जाए, केंद्र सरकार द्वारा मेट्रो का काम चल रहा है, जैसे कि पूना से हिंजवड़ी तक मेट्रो का काम चलना है, पुणे से पिंपरी चिंचवड तक मेट्रो का काम चल रहा है, अगर इस मेट्रो को बढ़ावा दिया जाए चाकन इंडस्ट्री, तळेगाव इंडस्ट्री तक, तो लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रो को मंजूरी मिली है पूना से पिंपरी तक, वहाँ पिंपरी से निगड़ी भक्ति शक्ति तक मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास कई दिनों से फाइल पड़ी है। ये मंजूरी अगर मिलती तो निश्चित रूप से सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा एक मार्ग है जैसा कि NH4 जो देवरोड से चाकन तक जाता है, हेवी ट्रैफिक वहाँ रहती है। ये मार्ग पिंपरी चिंचवड शहर से गुजरता है। या इस शहर पे इस मार्ग पर अगर नया डीपी बनाया जाए और उसमें सर्विस रोड और अंडरपास किया जाए तो लोगों की समस्या दूर होगी। यहाँ कई सारे ऐसे मार्ग है, इस मार्ग पर हमेशा ट्रैफिक जाम होती है, इस मार्ग पर काम करने की आवश्यकता है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पिंपरी चिंचवड शहर में से पवना इंद्रायणी नदी गुजरती है। इस नदी की सुधार के लिए केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर ये मंजूरी मिलती तो ये सिटी हार्ट की ये पूरी नदियाँ हैं, अगर अच्छी हो जाएगी और जो नदी में से गंदगी फैलती है वो दूर हो जाएगी। मेरे क्षेत्र में नया एयरपोर्ट बन रहा है पनवेल नई मुंबई के करीब, और उस करीब राज्य सरकार द्वारा मुंबई से कोस्टल रोड भी बन रहा है, और ये पूरा भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण शहर आगे चलकर बन रहा है नई मुंबई के करीब। केंद्र सरकार द्वारा नया मार्ग अगर जो पनवेल से पूना तक, पनवेल, खोपोली, लोनावला नए मार्ग अगर बन जाता रेलवे का, तो पूरी सुविधा मध्य महाराष्ट्र को होगी और एक अच्छा मार्ग निर्माण होगा। और आगे चलकर जो JNPT पोर्ट, नया एयरपोर्ट, ये मुंबई के करीब पूरा ये इलाका जैसे कि अच्छा हब है, तो उनको एक सुविधा प्राप्त होगी। केंद्र सरकार द्वारा जो जो काम चलते उस पर निगरानी रखने के लिए अलग एजेंसी की भी प्रावधान होनी चाहिए। जैसे कि कई सारे रोड के काम चालू है और रोड के काम में ठेकेदार द्वारा सब ठेकेदार दिए जाते और उनसे काम अच्छी तरह से क्वालिटी में नहीं होते, तो ये इस पर निगरानी रखने के लिए अलग से एजेंसी का प्रावधान किया जाए। मैं फिर से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए कई सालों में एक देश भर में अच्छा काम जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ, वो अच्छा काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, वित्त मंत्री को भी इस बारे में धन्यवाद देता हूँ और मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है अप्पा। श्री के सुरेश जी। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to participate supplementary demands grants. It was moved by Honorable Finance Minister in this House. Sir, at the very outset, let me express my strong objection and disapproval of Finance Minister Madam Nirmala Sitharaman ji's statement today in the House morning question and answer time. So, honorable members, raise doubt about the nation's economic performance. Are jealous countries increasing economy?
Honorable Finance Minister, nobody is jealous. India's economy or India's progress, and it is not just the BJP who can stake claim to the nation's economic development. Every single Indian citizen has the right to question anyone in the executive, including Prime Minister, the Finance Minister, or any cabinet minister for that matter. It is called democracy, where people's rights are supreme, and we, the members of the parliament, are the representatives of the people, will India's voice and the symbols of India's poor and downtrodden. So you must not to antagonistic to expression of dissent and counter arguments, as we are still living in Democratic Republic of India. Sir, now let me come to the main points of the debate, wherein Finance Minister has claimed Indian economy is undergoing a rest and we are growing faster than ever. Our currency and India has fastest growing economy. If this is the case, then we are not jealous, but we are worried that Finance Minister is fond of relying upon window dressing than addressing the deep wounds of India working class, the scheduled castes and scheduled tribes, unemployed man and woman, and more significantly, the owners of the small and medium business who are committing suicide as they are suffering the triple attack of demonetization, faulty GST, and COVID, wherein the government of India did not anything to address the concern of these classes. Sir, Madam Finance Minister is so confident of Indian economy. Then why physical ground realities? Where growth projections in financial year 2024 in percentage-wise is Moody's 4.8%, S&P 6%, Nomura 5.1%, OECD 5.7%, Fitch 6.20%, World Bank 6.6%. It can be seen that most global financial rating agencies have downgraded India's financial year 24 GDP growth estimates sharply. Some are even projecting a sub 5% growth for next fiscal. This means that there is concern about India's economic performance among the world leading rate agencies who keep track of Indian economy development and performance. I would also state that Nomura rating agency is one of the latest reports that India's growth rate cycle has packed and broad-based slowdown is underway. I must further state that various reports state that revenue growth has already started slowing down and GST revenues have pleated with the inflation, and there is a fall in import growth and corporate profits. Another area where the government failed in the disinvestment and the government is finding it difficult to achieve the disinvestment target of rupees 65,000 crores in the current fiscal. The government can't keep on raising the disinvestment targets year after year, as there are limited central public sector enterprises left to be monetized in future. Sir, so now we can assume the government's revenue are drying up and the new avenues of revenue are hit by domestic and international pressures. Let us further examine other indicators that deflate the government's claim of the resilient India. According to RBI August Bulletin, funds raised for capital expenditure through banks, financial institutions, external commercial borrowing, foreign currency, convertible bonds, and initial public offers dipped 28% from rupees 2071 to
2,71,374 crores in financial year 2022, 1,000 crore 1,094 crores financial year 2022. In this growth, despite corporate tax cut from 30% to 22%. Mr. Chairman, sir, the CMI data says, CMIE, not CME, CMIE data says capital expenditure on new projects nearly halved from 8.18 lakh crore in January-March financial year 22 to 4.2 lakh crore in April-June financial year 23. So, Honorable Member Jain Singh Jai's keenly listened to my arguments. I hope that he will give a reply when he is going to speak. According to the World Bank, private sector gross fixed capital formation in GDP dip from 31% to 2011 to 22% in 2020. Total gross fixed capital formation came down from 34.3% to GDP in financial year 12 to 30.4% of financial year 22. Is this something that anyone must be jealous? We must be worried. Employment scenario. As per CMIE data, the urban employment rate rose to 8.96% of the November from 7.21% of the previous month, while the rural unemployment rate slipped to 7.55% from 8.0%. The data showed. So again, that talks on India rising and progressing in economic development front in a fake projection, as there is no jobs in urban areas and people returning to rural areas push demand in rural areas, which is caused by a sudden surge, and that cannot be called as growth. So the data clearly shows that the unemployment rate is far higher than the government to feel happy. So we are not jealous at all. We are very much worried, Madam Finance Minister. Apart from these areas, let me also highlight the public sector where the government can actually create employment in banking of the area, as now there are 9,079.327 vacancies in central government with 22,093.943 in the Ministry of Railways, followed 2,264 defense and 143.536 in home affairs. The data indicates unemployment in the public sector is equally severe, and government is failure to addressing the concern the youth who are employed. The Congress party is experiencing a pain and disappointment of the youths as Bharat Jodo Yatra led by Shri Rahul Gandhi, supported by lakh and lakh of unemployed youths who are telling us about their existential crisis and agony they suffer, and the finance minister still calls our economy to be the greatest and call us jealous. So, apart from this, I would like to state that owing the financial crisis, the Indian government must be not grant to financial support Kerala state, and the government of Kerala has submitted the wasted precious public resources introducing Silver Line rail project, which is nothing but a wasteful expenditure of public money. I am pointing out the Kerala issue, sir, in the supplementary demands grants. But, sir, the government of Kerala pressurizing to central government. I am concluding. The government of Kerala is pressurizing to central government to get a sanction from Ministry of Finance as well as Ministry of Railways for Silver Line. That is highly objectionable. That is anti-people project. That's why I would like to request Honorable Finance Minister through you, sir. Silver Line is anti-people project. That project will not clear from Government of India. Sir, Vande Bharat train, Kerala is not considered. Sir, All India Medical Institute, Kerala is not considered. And our railway zone, Kerala request is not considered. And also flood relief during 2018 flood. At that time, central government has given a rice and wheat. Now they are asking money.
Central government is asking money for flood relief materials. That is very, very objectionable, sir. Sir, sir, Andhra is also very important about the NRIs. Gulf Malayalis earning crore and crore rupees for the government of India. But at the same time, after COVID, lack of Gulf Malayalis returns from Gulf to Kerala. There is no rehabilitation package for Gulf returnees in Kerala. That also, so many proposals has been given. Sir, what is the natural rubber prices falling day by day? Earlier, 240 to 250 per kg they are getting the small and marginal farmers. Now they are getting 100 rupees or 140 rupees. What is the situation, sir? 100 and 140 rupees. How they can live? How they can cultivate the rubber, sir? And also, sir, in Kerala, cashew industries are also facing severe crisis. Cashew. There is no financial support from government of India to reviving the cashew industry. Cashew industry also earning crore and crore foreign exchange to India. But at the same time, government of India is not supporting the cashew workers as well as cashew entrepreneurs. That also we are facing big issues, sir. Sir, in my parliamentary constituency, Kuttanad, farmers is crying. There is no any package for paddy farmers in Kuttanad. So I would like to request Honorable Finance Minister, her next budget, 1,000 crores rupees to be included in the budget proposal for the package of Kuttanad paddy farmers. Sir, in my parliamentary constituency is a very backward constituency. So government of India is going to start 140 medical colleges. So I am requesting through you, sir, to one medical college should be set up in my parliamentary constituency, Changanur. Sir, finally, Sabarimala, I don't know, you are very much aware of Sabarimala. Majority of the devotees are coming from Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. Sabarimala is part of my constituency. All the devotees coming to my place, Changanur, from there they are going to Sabarimala. But so far, Sabarimala pilgrims are facing so many problems. But the government of India is not supporting Sabarimala package. There is a need for a package for Sabarimala pilgrims. So Sabarimala also in this season already pilgrims have started. Lakh of devotees are coming every day from Andhra, Karnataka, Telangana. So there is no facility to provide all the devotees in Sannidhanam and Pamba and Changanur, other places. So government of India and state government should come forward to make a package for the providing facilities for the our action plan, Sabarimala action plan, to provide the facilities of Sabarimala pilgrims. With these words, I thank you, sir. Give me opportunity. Thank you. Shri Jayant Sinha ji. बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज आपने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को समर्थन देने के लिए मुझे एक अवसर दिया है बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, अभी चुनाव के परिणाम आए और जब चुनाव के परिणाम आने लगे तो हम सबके सामने एक ऐतिहासिक दृश्य हम सबको नजर आया। और वो क्या था? वो ऐतिहासिक दृश्य वो ऐसा था कि जो हम लोगों ने भारत में कभी देखा ही नहीं था, वो हमको नजर आया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और साहसिक और कुशल नेतृत्व के कारण छठे बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और हम लोगों ने इतिहास रचा। और मैं इस चुनावी परिणाम के बारे में, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज भारत में सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास का अगर कहीं भी उदाहरण है, नीतियां बनाने का कहीं कोई भी उदाहरण है, कुशल बजट रखने का कहीं कोई भी उदाहरण है, तो वो गुजरात में है, जहां हमारी डबल इंजन की सरकार चली है। और अब वही कुशल नीति, वही नेतृत्व अब भारत को भी मिल रहा है और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में वो नजर आ रहा है।
और वही जो हमें सफलता गुजरात में मिली है, वही सफलता मुझे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है माननीय सदस्य भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगे कि जो सफलता हमें गुजरात में मिलती आई है चुनावी परिणाम में, वो हमको भारत में भी मिलती आएगी, क्योंकि वही कुशलता, वही जनहित, वही सार्वजनिक सोच के साथ हम लोग ऐसे बजट बनाते हैं। इस बजट में 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने खर्चे बढ़ाए और कई वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है कि जो खर्चे थे वो फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ और हम लोगों ने खर्च किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हम लोगों ने 80,000 करोड़ और खर्च किया, हम लोगों ने एलपीजी सब्सिडी में और पैसे दिए, हम लोगों ने रेलवेज में निवेश दिया, हमने नरेगा में पैसा दिया। ये सब जो खर्चे थे वो इसलिए थे क्योंकि विश्व में एक माहौल पैदा हुआ, विश्व में एक उथल पुथल हुआ, जहां हम लोगों को अपनी जनता को सुरक्षित रखना था, महंगाई पे अंकुश लगाना था और साथ साथ विकास में और उत्पादन की बढ़ोतरी में हम लोगों को पूरी तरीके से प्रोत्साहन देना था। और ये हम लोगों ने अपनी नीतियों के द्वारा और इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा हम लोगों ने किया है, महंगाई पे अंकुश लगाया है और विकास के लिए और ग्रोथ के लिए जो हम लोगों को निवेश करना था, जो हम लोगों को राशि देनी थी, वो भी हम लोगों ने इस बजट के द्वारा दिया है। और इस कारण अगर विश्व में अर्थव्यवस्था के नजरिए से आप देखें, अगर कहीं चमकता हुआ सितारा आपको नजर आएगा तो वो भारत ही नजर आएगा। और इसलिए क्योंकि माननीय सभापति महोदय, अगर आप देखें तो विकसित देशों में 40 साल में जो महंगाई का दर नहीं आया था, जहां 2-3% महंगाई का दर होता था, आज का समय 8-10% वहां महंगाई का दर चल रहा है। जहां 3-4% का उनका जीडीपी का ग्रोथ रेट होता था, आज के समय वो 0-1 के कगार पे आ गया है। और दुखद बात तो यह है कि अगर हम अपने पड़ोस में देखें, पाकिस्तान को देखें, श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, उनकी जो हालत हो गई उसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं। ये दुनिया की परिस्थितियां, एक इस प्रकार का युद्ध चल रहा है जो लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, इतनी बड़ी एक लड़ाई चल रही है, इतने बड़े वहां जोरों से खर्चे हो रहे हैं और उस पर पूरे वर्ल्ड के ट्रेडिंग सिस्टम पे प्रभाव पड़ रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया। इन परिस्थितियों में कोविड के बाद तब भी इस डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा, बजट के द्वारा और कुशल नीतियों के द्वारा हम लोगों ने सब जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो हम लोगों का ग्रोथ रेट हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप आंकड़े को देखें, आज उन सब आंकड़ों में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 आज के समय हम लोगों को माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण हम अपने को पा रहे हैं। तो ये हम लोगों ने काम किया है। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर हम लोगों को भारत की नीति को समझना है तो हम इसे कैसे समझें, कौन से ऐसे विशेष जो आपकी नीतियां हैं जिसके द्वारा ये जो चमकता हुआ सितारा जो हमारा भारत बना है, ये कैसे बना है। तो मैं सरलता और लोगों को समझाने के लिए जनसभाओं में कहता हूं कि आप 6x3 यानी आप 6x3 को याद करिए। अगर 3 ऐसे आप नीतियों को याद रखिएगा जो 3-3 अक्षर के हैं, 3-3 शब्दों के हैं, ऐसे 6 नीति हैं। अगर आप इनको याद रखिएगा तो पूरी हम लोगों की नीतियों को आप समझ जाइएगा। पहला डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके द्वारा चाहे वो जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो या कोई भी हमें सब्सिडी देनी हो, वो हम सीधा लोगों के बैंक के खाते में दे देते हैं बिना किसी दलाली के और बिचौली की। डीबीटी। दूसरा यूपीआई, मैंने कहा ना कि 3-3 अक्षर के हैं, डीबीटी यूपीआई, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम फटाफट आपको पैसे मिल जाते हैं। आप आज घूमने जाएं, आपको सब्जी वाला नजर आएगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको दुकानदार नजर आएगा यूपीआई का उपयोग कर रहा है, आपको टैक्सी वाला दिखेगा वो यूपीआई का उपयोग कर रहा है। हमने फ्रिक्शन अपनी अर्थव्यवस्था में काफी कम कर दिए यूपीआई के द्वारा। तीसरा जीएसटी। अभी निशिकांत जी बता रहे थे कि अपेक्षा थी कि जीएसटी में 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ आएगा, लेकिन इस कुशलता से हम लोगों ने इसको अमल किया है, इसको निरंतर हम लोग बेहतर बनाते चले गए कि आज 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़ तक हम लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। ये जीएसटी का हम लोगों का फायदा हुआ है। फिर आगे हम लोग आते हैं एक और नीति पे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके द्वारा जो
कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, जो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, एनपीए होती हैं, उनके एसेट्स हम लोग लेकर उनको फिर रीपर्पस करके अच्छी तरीके से उनको हम लोग चला सकते हैं। और इसका मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूं। इलेक्ट्रो स्टील का प्लांट ही है हमारे बोकारो में, जिसको वेदांता ने लेकर आज फिर नए सिरे से चला दिया है। तो ये आईबीसी के कारण ये एसेट्स का जो हम लोगों ने पूरी तरीके से रिफर्बिशमेंट कराया है, ये भी अनोखी एक बात है। फिर मैं 5वीं बात पे आता हूं, AIL, एयर इंडिया लिमिटेड। इस पे भी चर्चा हुई थी, माननीय शशि थरूर जी ने इसके बारे में कहा, माननीय निशिकांत जी ने भी इसके बारे में कहा। मैं सिर्फ आप लोगों का इस पे एक महत्वपूर्ण निवेश के बारे में बताना चाहता हूं। कल ही अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि एयर इंडिया अब टाटा ने जिसने ले ली है, उसमें 500 प्लेन का एयर इंडिया कह रहा है वो ऑर्डर करेगा। 500 प्लेन में आपको नैरो बॉडीज भी मिलेंगे, वाइड बॉडीज भी मिलेंगे। ये निवेश हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया, एयर इंडिया टाटा के पास गया, टाटा अब निवेश कर रहा है। इसमें रोजगार का भी सृजन होगा, इसमें निवेश भी होगा, और दूर दूर तक अगर आपको जहां भी जाना होगा विमान सेवा आपको मिल जाएगी। ये भी हम लोगों ने एविएशन में एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हम लोगों ने किया है। ये भी एक 3 अक्षर का शब्द है, AIL, इसको भी आप समझ लीजिए। और अंतिम, और अभी सुरेश जी ने कहा कि उनको चिंता है रोजगार के बारे में। हम सबको चिंता है रोजगार के बारे में। हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो हैं, प्रतिभावान ऊर्जावान हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को बेहतर से बेहतर रोजगार मिले और उनकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड क्लास हो, और उनको आगे के समय भी, आज सिर्फ नहीं, आगे के समय भी उनको अच्छे करियर के अपॉर्चुनिटीज मिले। और इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत बढ़िया एक नीति बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और वो है एक और 3 अक्षर का एक मामला, और वो है PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में, करीब 15 क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को हम लोगों ने लागू किया है। इसके द्वारा नए नए कारखाने खुल रहे हैं, जो हम लोगों के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, जहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बारे में मैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊं कि गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का शायद 1 लाख करोड़ का कारखाना आ रहा है, वो भी PLI के द्वारा आ रहा है। और इसके कारण गुजरात को तो विकास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम भी अपने देश को, अपनी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए हमें बहुत जरूरत है। अगर हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था होनी है, अगर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग चाहते हैं, कंप्यूटर हम लोग चाहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, तो जब तक हम अपने देश में सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पाएंगे तो हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा 6x3, ये 6 नीतियां हैं, 3-3 अक्षरों वाली। इनको मैं विपक्ष के सब अपने साथियों को मैं कहूंगा, ये कुंजी बना लीजिए, इनको लिख लीजिए। जब भी आप भूल जाएं कि विकास क्या हो रहा है तो इस कुंजी को देख लीजिए। 6x3 सरल एक फॉर्मूला है, उसका उपयोग करिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है आप मेरे साथ पूरी तरीके से सहमत भी होंगे कि ये 6x3 का फॉर्मूला जो है बहुत ही कामयाब हुआ है, बहुत सफल हुआ है और बहुत प्रभावशाली हुआ है। तो माननीय सभापति महोदय, अगर हमें विकास को एक सुदृढ़ता देनी है, विकास को एक ऊर्जा देनी है, तो हमें ऐसे नीतियों को अपनाना पड़ेगा जो ना सिर्फ आज के दिन लेकिन अगले दशकों में भी भारत को आगे ले जा सकते हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम लोग बन ही चुके हैं। अब अनुमान है कि जल्द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएंगे, आगे $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। ये सब बनेगी क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच है, सोच भारत की है। और वो जब ये नीतियां बनाते हैं तो वो भारत को एक ताकत देते हैं, भारत को एक शक्ति देते हैं, भारत को एक ऊर्जा देते हैं। और जब ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ऐसे कुशल नीतियां बना रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों को मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ मालूम है, कि ये जो आप लोगों की रेवड़ी की जो नीतियां बन रही हैं, ये भारत को ले डुबाएंगी। जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, हम लोग अपने राज्यों को हम लोग स्टेबल रखें, राज्यों में हम लोग अच्छी हम लोग नीतियां बना रहे हैं, वित्तीय परिस्थितियों को संभाले हुए हैं। लेकिन जहां जहां डबल इंजन सरकार नहीं है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, और अब हिमाचल हो, दिल्ली हो, सब जगह
चाहे वो रेवड़ी वाला मामला हो, संदेश वाला मामला हो, जलेबी वाला मामला हो, हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं। हम लोग सिर्फ इस प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के लिए हम देख रहे हैं कि नीतियां बनाई जा रही हैं। और अभी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात चली है, इसमें देखिए आप चाह रहे हैं कि आज आप इससे फायदा लें, आप इसके द्वारा अपने पैसे और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, लेकिन आप किसका पेट काट के ऐसा कर रहे हैं? आप अपने बच्चों का पेट काट के अपना आज जो है भोजन चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो देश के बारे में चिंता करे, वो कैसे कर सकता है? लेकिन तब भी सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो देश को बहुत हानिकारक और बहुत ही नष्ट करने वाली ये नीतियां हैं। और आप देख लीजिए, आप हम लोगों के पड़ोस में श्रीलंका का अगर आप उदाहरण देख लें, वहां भी इस प्रकार के कुछ वादे किए गए, वहां भी कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, और आज जो श्रीलंका की दुर्दशा है वो हम लोग सब लोग उससे परिचित हैं। तो आप अपने राज्यों को इस प्रकार नष्ट न करें, अपने राज्यों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपके राज्य डूबेंगे, आपके राज्यों में ये सब संकट आएगा, तो वो केंद्र सरकार को ही, हम ही लोगों को इसको बचाना पड़ेगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता से आप अपनी गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं चला सकेंगे। एक बार आप भले जीत जाएं, लेकिन जब अगली बार आपको जनता का सामना करना पड़ेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैं इसका उदाहरण अपने ही राज्य झारखंड के बारे में, मेरे झारखंड के सब यहाँ साथी बैठे हैं, मैं झारखंड के बारे में बताना चाहता हूं, जहां सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वादे किए, लेकिन आज एक भी वादा वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो निवेश का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। क्योंकि जब आपकी नीतियां ही नहीं ठीक है, जब आपकी सोच ही भ्रष्ट है, तो आप जनता को कैसे आप लाभ दिलवा सकते हैं? हमारी क्षेत्र हजारीबाग में मैं आपको बता दूं कि कई जगह हम लोगों को रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, टोकी सूद में बनाना है, कुर्से में बनाना है। जहां जहां रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, वहां राज्य सरकार को भी योगदान देना होता है, राज्य सरकार को भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार जो सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, जो सिर्फ बेईमानी में लगी हुई है, वो राज्य सरकार इस प्रकार के विकास के काम कर ही नहीं पा रही है। और जनता की आज जो दुर्दशा है, वो झारखंड में मेरे सब यहाँ साथी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए माननीय जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत बरन महतो जी हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। विद्युत जी के हम लोग जमशेदपुर में दालबुंगड़ में जाकर हम लोगों ने हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, हम लोगों ने हजारीबाग में शिलान्यास किया हवाई अड्डे का। इसमें राज्य सरकार की भी योगदान जरूरी है, चाहे वो फॉरेस्ट का एनओसी हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो। लेकिन जब आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के बारे में सोचते हैं, आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, आप देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी करूंगा कि झारखंड में ये सरकार किसी भी हालत में वापस नहीं आएगी। लेकिन जहां गुजरात में जहां हम लोगों ने काम करके सही नीतियों के द्वारा, कुशल प्रशासन के कारण और जनता के सहयोग के कारण, जहां हम लोगों ने सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हम लोगों ने दिया है साथियों, सस्ती लोकप्रियता नहीं, हम लोगों ने सही लोकप्रियता वहां पाई है। और एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, 5 चुनाव नहीं, 6 चुनाव हम लोग जीते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर लोकतांत्रिक इतिहास विश्व में देखा जाए, तो कहीं नहीं आपको दिखेगा कि इतने 27 साल के बाद भी, इतने सालों के बाद भी एक कोई ऐसी सरकार हो जिसका प्रो इनकम्बेंसी इतना हो कि 156 सीट जीते, 85% सीट जीते और इतने बड़ी बहुमत से हम लोग जीते, क्योंकि हम लोग सस्ती लोकप्रियता की ओर नहीं चलते हैं। हम लोग भारत माता को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत माता को मजबूत बनाने के लिए, देश का सर्वांगीण विकास बनाने के लिए हम लोग अपनी नीतियां बनाते हैं। और यही इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी आपको जरूर नजर आएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयदेव गाला जी। जयदेव जी, वो मार के बनाई है। No, nothing goes on record. Thank you, sir. Mr. Chairman, sir. Thank you, sir. Chairman, sir, I rise to support the additional expenditure the Honorable Finance Minister is seeking from the House through the first batch of supplementary demand for grants
for 2022-23, and also the demands for excess grants for 2019-20. Sir, I will be brief and crisp since time given to me is very little. Sir, let me start with the issues of my state of Andhra Pradesh first. First is the issue that has been going on for the last 3 years, sir. The farmers of 29 villages who have given 33,000 acres of fertile agricultural land for the development of the capital city of Amaravati have been on a non-stop protest since December 2019, fighting to ensure that Amaravati is made the sole capital of the state and to ensure that the promises made by them by the Government of India are fulfilled. In a few days from now, that is on the 18th of December 2022, we are going to mark 3 years of protest. There has never before been such a long protest by farmers for their rights in the country, sir. I appeal to the Honourable Prime Minister, through the Honourable Finance Minister, to announce that Amaravati will remain the capital of AP. I also request her to provide the funds for the development of Amaravati, as all the development projects are at a standstill. Secondly, sir, I come to Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, sir. The completion of the project will turn our state into a lush green state, full of crops, and also meet the drinking water requirements of the entire state. Therefore, I urge the Honourable Finance Minister to approve the revised cost estimate amount of 55,548 crores as recommended by the TAC, which includes the cost for land acquisition and R&R for the people displaced due to the project. Finally, through you, sir, I request the Honourable Finance Minister to release the funds for the 18 commitments mentioned in the AP Reorganisation Act. Through you, sir, I would like to remind the government that this is the final budget that is going to be presented before the 10-year deadline that is mentioned in the AP Reorganisation Act comes to a close. And therefore, all of the commitments legally and through the act made by this House should be completed in full by 2020. So the next budget is extremely important for us. And therefore, I request the Honourable Finance Minister to start releasing funds to ensure that all the promises made in the Act to the 5 crore people of Andhra Pradesh are fulfilled in full. Sir, I now come to the supplementary demand for grants and the demand for excess grants. Firstly, rupees 1.09 lakh crores the FM has sought for fertilizer subsidy to farmers. This increase in fertilizer subsidy is primarily due to geopolitical reasons and logistics issues that have arisen due to the Russia-Ukraine crisis. Both are major suppliers of fertilizer to India, and the war between them has disrupted the flow of fertilizers. This demand is also justified since it is meant for farmers. But here I wish to make a point that the Honourable Prime Minister, while inaugurating the Ramagundam Fertilizer Corporation, is on record saying that we need about 2.5 lakh crores for fertilizers. If you add the 1.05 lakh crores provision as fertilizer subsidy in the 22-23 budget, with the 1.09 lakh crores proposed now, it comes to about 2.14 lakh crores. So I would be grateful if the Honourable Minister can explain how she is going to fill the gap of around 36,000 crores, sir. The next demand is about the 30,000 crores towards payment of LPG subsidy to OMCs and the subsidy under the PM Ujjwala Yojana. This is also a welfare measure which nobody can oppose and hence justified. Sir, on the one hand, we have been pushing hard to make India Atmanirbhar, while on the other hand, we are not able to tap the resources that we have. I will give an example, sir. Andhra Pradesh, with nearly 1,000 kilometers of coastline, is having the second longest coastline in India. More than 27 billion cubic meters of natural gas reserves are yet to be recovered from inland and offshore sources in Andhra Pradesh. There are also reserves in Gujarat and the Northeast. The point is, if we are able to tap these resources, we can save huge foreign exchange and also achieve the objective of becoming Atmanirbhar. I am saying this because we import 60% of our LPG requirement from other countries. Moreover, some natural gas pipelines have also been conceived, such as the Kakinada to Vizag to Srikakulam, which was to be completed in June 2021, but not yet completed. Similarly, there was also a proposal to lay a natural gas pipeline from Kakinada to Vijayawada to Nellore as a part of the government's One Nation, One Gas Grid project.
I request the Honourable Finance Minister to clear these from her ministry so that they can be completed as per the schedule, which will help in reducing our dependence on foreign countries, sir. The third major head under which the Honourable Finance Minister sought approval of this House is 16,400 crore for Narega. Well, this also cannot be objected to, since it is also a welfare measure and meant exclusively for the poor. But taking advantage of this opportunity, sir, I wish to make a couple of points on Narega. How long are we going to ask poor, unskilled labour to do manual, unskilled work, sir? Shri Narendra Modi ji, after becoming the Prime Minister, is on record saying that even after 6 decades of our independence, we are still making people dig in for their livelihood. Why cannot we provide them skills, sir, so that they can do other skilled jobs and earn even more? I agree that the Government of India has started the project Unnati, but many states are not showing any interest in skilling Narega workers. Why is the question, sir? What are the reasons behind this? Secondly, the government targeted to give skill training to 20% of Narega workers who completed 100 days of unskilled work in 2020-21. But only a few thousand have been given skill training in 2021, sir. If there are any issues, I request the Honourable Finance Minister and the Rural Development Minister to convince the states for skilling Narega workers. And if there is any additional incentives to be paid to the workers, the Honourable FM can please consider it, because in the long run, there will be less pressure on resources under Narega if we are able to skill our workforce and move them away into real jobs, sir, as they will get more money elsewhere using their newly acquired skills. I'm just 2 minutes, sir. The next point I wish to make is relating to the figure fixed in the budget about expenditure. It was proposed in the budget 2022-23 to spend 39.4 lakh crores when compared to 37.7 lakh crores in 21-22. But if one looks at the expenditure in the first 3 quarters and anticipated expenditure in the last quarter of this fiscal, there's every likelihood of crossing the budgeted figures. It means it is going to breach the fiscal deficit target of 6.4%. Even though we have better GST collections, and we've got about 1.4 lakh crore collections 9 months in a row now, I wish to know to what extent will this help in keeping the fiscal deficit at 6.4%, because the expenditure may breach by around 1 lakh crores this fiscal year. I wish the Honourable Finance Minister to please shed some light on this. Sir, the Honourable Finance Minister, I'm concluding, sir, I'm on the last page. Sir, the Honourable Finance Minister is also proposing to spend about 10% of demands for capital expenditure in railways, roads, and under other heads. Here I wish to point out, and I'm sure the Honourable Finance Minister will also agree with me, that the pace of public capex has come down. I'll just finish in a minute, sir. If one looks at the budget papers, it was proposed to spend 35% higher, which was about 3% of GDP, at 7.5 lakh crores as capital expenditure for 2022-23. But public capex is not picking up. I wish to know the reasons behind this from the Honourable Minister. Moreover, sir, the Honourable Finance Minister in her budget speech at para number 113 allocated 1 lakh crores to states for capital investment. The Finance Ministry approved 58,200 crores under Part 1, but released only 26,300 crores. Under Part 2, 898 crores has been released, and another part, Ministry has approved and released 1,200 crores. Sir, we're at the fag end of the third quarter, and not even 30% was announced in the budget. So I'll just complete the conclusion. I'm coming to conclusion, sir. More than your allotted I'll time. just complete the conclusion, sir. There's no doubt that it is a big challenge for India to sustain high growth rate and lift millions out of poverty. And unemployment is the biggest challenge that we are facing today. Sir, around 12 million people are joining the labour force every year, but we're not able to generate jobs for even half of them. The labour force participation rate dropped from 40% from 46% 6 years ago, and the unemployment rate is hovering at 7 to 8%. The point I wish to make is, it is very rare to find GDP is going up while employment is dwindling. So, and I think that India is one of the few countries where GDP is growing, but employment is falling. This is called jobless growth, sir. I wish the Honourable Finance Minister to please throw some light on this. Thank you for giving me this opportunity, sir. Thank you very much, Chairman sir, for allowing me to participate in the discussion on supplementary demands for grant 2022-2023. There is no doubt we are all participating in this debate, which is most important for our country, and we need to come and we need to arrive at a conclusion that we are all
putting our efforts to a common goal of development of a country, sir. Sir, as my previous speakers have already elucidated on the MSME part, so the most affected sector as far as the economic part is concerned is the MSME sector, sir. Especially based on the three reforms this government have taken place. One is the demonetization, the other one is the GST, and now the pandemic situation. At these three policy decisions, the most affected area is the MSME sector. So to bridge the gap of this MSME sector, to a question number 823 by the MSME Minister Shri Narayan Rane on 2nd December 2021, he made the reply statement that the centre has taken around 3,750 crore rupees borrowed from the World Bank in June 2020 for a ramp program, sir. But so far the cabinet has not released, so the amount has not released because of the cabinet has not approved that amount so far, sir. And I would like to get the clarification from the Honorable Finance Minister why such grant is not released so far. My second point is that the centre has announced nearly rupees 20 lakh crore rupees to combat the impact of the COVID in the country. My simple question to the Finance Minister through you, sir, is that how much of this rupees 20 lakh crore was actually infused into the economy since March 2020? Third, sir, the central government announced rupees 1.70 lakh crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor people to help them fight the battle against the pandemic. How much of this 1.7 lakh crore was actually released to the poor since March 2020, sir? So the fourth one, according to the report by the Controller and Auditor General of India, over 2.18 lakh crore collected by the central government as cess for specific purposes, as such education, sanitation and infrastructure, have either not been fully transferred to the dedicated fund or remain unutilized. For instance, I can say that to my constituency, sir. See, the education, which is the most important pillar for our societies, in my constituency alone, don't know why the administration have closed nearly 8 primary schools, which is, in a way, we have passed the Right to Education Act in 2009, wherein 1 kilometer peripheral we need to have primary schools, wherein the 8 primary schools has been closed only because there was a shortage of teachers, and to overcome the shortage of teachers, instead of appointing the teachers, they are closing down the schools. This is the scenario happening. As far as scholarship for the students are concerned, sir, for the last 2 to 3 years, scholarship is pending, and scholarship pendency have gone into such a level that the students are being rolled out from the institutions, which is an alarming situation. So that why we are parked these funds, 2.18 lakh crore rupee, which is collected on behalf of the cess as education for sanitization, and why the government is not releasing is the point here, sir. So the third one, the other one is, sir, the public transport. Public transport is the vital part for any area for the development part, sir. See, in any rural area, to connect with what everybody is asking about railways, for me it is the ship connectivity, sir. So we have, in 2015, a 15-year perspective plan for the futuristic concept made by the shipping ministry, Home Ministry, Lakshadweep administration, all together made these 15 years perspective plan, looking into the futuristic development of Lakshadweep into the tourism sectors, and cargo movement, all those aspects. So that 15-year perspective plan was really needed for the development of the island. Why there is no allocation in that sector in this year is a question here, because the public transport is the most important part for any financial backup for the any rural places. Sir, same in the case of coming into the back of the Awas Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana. In this Pradhan Mantri Awas Yojana, which I have already raised in the parliamentary committees also. See, the rural areas where it is far-flung areas, the conditions, the criteria, guidelines, sir, I'm concluding. Guidelines which is prescribed in the Pradhan Mantri Awas Yojana, if a house is having a refrigerator,
which is mandatory for a far-flung area to keep the food items not spoiled, a refrigerator is required. If a house is having a refrigerator, they fall in the non-eligible category to get the Pradhan Mantri Awas Yojana. So my request with the finance minister is that to come out with a special plan in the rural areas where the benefit of the Awas Yojana can also be... Please conclude. So I'm concluding, sir. Sir, the same in the cases of, the fisheries sector, sir. Fisheries, agriculture and animal husbandry. The schemes which run out for the subsidy part for the getting the feeds for the poultry growers, for the fishermen's other subsidy schemes. All those schemes, as far as my area is concerned, it's all stopped and the fishermen, farmers, the poultry growers are not getting anything. So I'm concluding, sir. But all these areas, when we ask for the supplementary demand for grant, all these benefits, sir, I'm concluding, sir. Benefits should get to the people. My concern is that all these points should be considered, sir. Thank you so much. For allowing me to speak on the demand for excess grants for 2019-20 and supplementary demand for grants 22-23, sir. I thank Honorable Prime Minister and my party for giving this opportunity and to support the supplementary demand for grants and the demand for excess grants for expenditure of the central government, sir. Sir, demand for excess grants for 2019 and 20, sir. The excess expenditure during 1920 occurred in 2 grants and 1 appropriation, sir, amounting to the total of 32,637 crores, sir. Out of which, sir, 701 crores has been a capital outlay on defense services under the Ministry of Defense, sir. And it has been excess expenditure हुआ है, sir. इसी के लिए हम आज उसको सपोर्ट करके पास कर रहे हैं, सर. और दूसरा 31,934,000 crores has been given to, sir. The excess was incurred due to transfer of more funds to GST compensation funds in order to apportion the balance IGST pertaining to the financial year 2018, sir. And in the present supplementary demand for grants, sir, the first batch of supplementary demand for grants for 22-23, it includes 75 grants and 6 appropriations.